पीएनजी फॉर्म में डाउनलोड करना हो जाए। हेलो।
Am I audible? Yes, yes. You will be playing the PPTs, is it? Or will we be presenting them? Matlab, we've sent them to you, right? We will be presenting it, ma'am. Okay, Yeah. great.
Good morning, everyone. It's 10, so we'll wait 5 more minutes to join more people, and then we will start in 5 minutes.
Good morning, everyone. Can someone please confirm if I am audible? Yes, you are audible. Okay. Okay, thanks, Anand. So yeah, good morning, everyone. I am Ankush, and from the Partners and Promise of Commons Initiative and the whole Community Conference team, I welcome you all to the fourth edition of Community Conference. This is the fourth edition of Community Conference, and this year we have been joined by the 18 states and 10 different countries through their responses. In Community Conference, we celebrate the stories of resilience and traditional wisdom told by communities in their own voices. नमस्कार, मैं अंकुश हूँ। हमारे पार्टनर्स की तरफ से और कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस की टीम की तरफ से और प्रॉमिस ऑफ कॉमन्स की तरफ से मैं आप सभी का कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस के चौथे संस्करण में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस साल हमें भारत के लगभग 18 राज्यों से और अलग अलग देशों से लोग जुड़े हैं जो कि अपनी स्टोरीज प्रेजेंट करेंगे और इस स्टोरीज में वो उन्होंने अपने अपने अलग अलग लोकेशंस में जो काम किए हैं, जो नेचुरल रिसोर्स गवर्नेंस को और नैसर्गिक साझा संसाधनों को लेकर काम किए हैं, उन सब के बारे में अपने अनुभव शेयर करेंगे। आज हमारे साथ आज हमारे साथ 6 प्रेजेंटर्स जुड़े हैं जो कि अर्बन कॉमन्स इस थीम पे अपने अनुभव साझा करेंगे। We have joined today by the 6 presenters, 5 from India, different states of India from Maharashtra, Telangana, and Delhi, as well as we have also joined by a presenter from Peru. And they will share their experiences of urban commons. First of all, just a small introduction of what is urban commons. Like we know that there are commons, and there are also some of the commons in urban spaces which are managed and governed by its city dwellers. These commons could be anything. These commons could be park, lakes, bus stops. This could be anything which is managed and governed by its people of the city. There are spaces, there are physical spaces, there are cultural spaces in cities also. Some of these spaces are also been introduced in today's presentation. Our 6 presenters will be sharing their stories of Our 6 presenters will be sharing their stories of their work in their respective locations. Before moving to our first presentation, I would like to show, so since today is the second day of the community conference, and before moving to the next presentation, I would like you to show to the glimpses of the last day. I would request Adinath to start the video and share us a glimpses of yesterday. Can someone confirm if it's audible, if the video is audible? No. No, it's not audible. It's audible. Our video is not audible. Yeah, video is not audible. Just give us a minute to figure that out. Thank you. Can someone confirm if it's audible now?
Thank you, Adinath. Yeah. So like I mentioned, today is the second day of community conference, and we have been joined by total 164 presentations from different part of the country and abroad. Yesterday, we have been joined by 50 presenters. They have shared their stories of traditional wisdom and local resilience, their community stories of how they have been working tirelessly to conserve their commons and conserve their natural resources. As well as you have also seen in the video that many people have been joined by the local screenings also. You have seen that there has been local screening organized in schools, colleges, and different places in cities and villages. We have been joined by large number yesterday from different locations, and like you see in the map, we have also joined by 40 different local screenings. जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हमारे कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस के चौथे संस्करण का दूसरा दिन है। कल हमें 50 अलग अलग जगहों से प्रेजेंटर्स कल हमारे साथ 50 अलग अलग जगहों से प्रेजेंटर्स ने अपने अनुभव साझा किए। उसके साथ साथ प्रेजेंटर्स के अलावा हमारे साथ भारत के अलग अलग जगहों से लोकल स्क्रीनिंग के माध्यम से भी बहुत से लोग जुड़े थे। स्कूल, कॉलेजेस से लेकर गांव में और अर्बन जगह और शहरों में भी लोकल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था। इसके साथ हम आज के प्रेजेंटेशन की तरफ मुड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमारे साथ इस सेशन में 6 प्रेजेंटर्स हैं। मैं सबसे पहले सभी प्रेजेंटर्स का और उनके सेशंस का इंट्रोडक्शन करा देता हूं। हिंदी और इंग्लिश में मैं उनका अनुवाद करूंगा। हमारे साथ पेरू से औरा लुस फर्नांडिस अबारका जी जुड़े हैं। महाराष्ट्र से सुयश रमेश ढगे जुड़े हैं। उसके बाद महाराष्ट्र से अमोल साखरकर जुड़े हैं। तेलंगाना से निवेदिता तुले जी जुड़े हैं। दिल्ली से सतपाल जी जुड़े हैं और महाराष्ट्र से तृप्ति गोमकले जी जुड़े हैं। इन औरा लुस फर्नांडिस अबारका इनका प्रेजेंटेशन है जो अर्बन रेजिस्टेंस इन आउटस्कर्ट्स ऑफ लीमा, जो कि पेरू में एक जगह है, वहां से उनका एक प्रेजेंटेशन है। उसके बाद सुयश अपने नांदेड़ प्लॉगर्स की जो स्टोरी है वो शेयर करेंगे। अमोल साखरकर जी कैसे उनकी कम्युनिटी ने जो उनके शहर के जो ग्रीन स्पेसेस है उसके रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन के लिए काम किया है, उसके बारे में अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। निवेदिता जी अपने अर्बन इकोलॉजी को लेके उन्होंने कैसे काम किया है वो शेयर करेंगे। सतपाल जी अपने ग्राम सभा को लेके और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को लेके दिल्ली में उन्होंने कैसे काम किया उसके बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे। और तृप्ति जी नागपुर में जो ईसासरी लेक है उसके रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन के बारे में अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। We have been joined today by 6 presenters from Peru, Maharashtra, Telangana, and Delhi. First of all, Aura Luz Fernandez Abarca will share us their experiences of urban resistance in the outskirts of Lima in Peru. After that, followed by Suyash, he will be sharing Nanded Blogger's story and how they have reclaimed the urban spaces through the collective action. Amol Sakharkar will be sharing their experiences from Maharashtra and how the community's dedication and how through the community dedication they have secured the green urban spaces. After that, Nivedita Tuli will be joining us from Telangana and they will be sharing their experiences of how they imagine urban ecology through the community action and also with the help of the children's.
After that, we will be joining by Satpal ji from their presentation from Delhi and how Gram Sabha and land democratic accountability have been shaped in their respective location. And the last presentation will be from Nagpur and how Trupti Gomkale and their team has reviving Isasari pond. Since all of our presenters are in the meeting, I would like to request Aura Luz Fernandez Abarca if they can share their presentation and if they can share their story, if they can start. Yes, I would request Adina to share the PPT also. Good morning. Can you just give me a minute? Yeah. I think they're not audible. Are they audible? Yeah. Hello? Can you Hello? say something? Yeah. I think you're not Am I audible. audible? Yeah? Okay. To me, not. Hello? Can you hear me? Yes, yes, now we can hear you. Yeah, Okay, thank you. yeah. First, namaste. It's a sincere honor to be here with you today. I'm grateful for the opportunity to share a Latin American perspective with you. Although our regions are geographically distant, we face similar urban and environmental challenges, and I hope this presentation contributes to a meaningful South-to-South dialogue. I will present the case of Lomas of Pamplona in Lima, Peru, and the powerful youth-led resistance that is emerging there. Well, to the next slide. Next slide. First of all, we need to talk about the Lima's urban expansion, that it's through inequality as a territorial process. So it's a tale of inequality. To understand this case, we need to look at the broader process of Lima's rapid urban expansion. The city's urban area has more than tripled in size over recent decades, driven by intense real estate speculation and continuous migration flows that are coming from the Andes, Cordillera of the Andes. This expansion has produced loss of agricultural land, increased pollution, pressure of water resource, and deepening of social and spatial segregation. In Lima, green areas remain concentrated in privileged districts, while the outskirts, where most of the population lives, lack access to healthy environments. So we need to talk about a specific place and outskirts of the city of Lima that it's called the Wall of Shame, that it's a physical barrier separating low-income settlements from wealthy areas, symbolizing urban inequality and environmental disregard. Thank you. The next one. Well, the Wall of Shame is the materialization of this inequality, one of the most shocking symbols of segregation in Lima. So it's a several kilometers long wall dividing low-income districts from wealthy neighborhoods. This structure is not just a wall, it's a public health determinant. It regulates access to mobility, green areas, security, and environmental equality. On one side, manicured parks, water availability, and urban services. And on the other hand, thus limited access to water, contamination, and informal settlements struggling with legitimacy. By separating population along socioeconomic lines, the wall also separates them in terms of health outcomes, reinforcing preventable inequalities. And fragilize ecosystems, because the natural ecosystems around the city, called the Lomas Costeras, is under pressure right now. This fragmented urban expansion has also degraded the green areas, fragile coastal ecosystems that function as Lima's green lungs.
These seasonal fog-watered hills provide biodiversity, microclimatic regulation, and potential protection against landslides. But informal occupations, real estate development, and territorial disputes have eroded them. This ecological destruction has directed health implications. Environmental damage is never neutral. It is socially distributed, and in Lima, it overwhelmingly affects those already marginalized. So these human settlements of Lomas de Pamplona is located in this district called San Juan de Miraflores, on the disadvantaged side of the Wall of Shame. The community faces limited access to water, scarcity of green areas, precarious housing, environmental degradation, and weak institutional presence. Yet it's here precisely in conditions of vulnerability that a powerful and inspiring form of collective urban resistance has emerged. And next one, please. The Lomas de Pamplona Collective, that since 2019, a group of young environmental activists, many of them residents, formed the Lomas de Pamplona Collective. Their mission is to protect what remains of the Lomas ecosystem, educate the public, and confront socio-environmental injustice. Their activity includes free guided walks every weekend. These walks explain the ecological value of the hills, the precarious conditions of informal settlements, and the segregating dynamics imposed by district boundaries. They function as environmental education, public health promotion, and political awareness building, reframing the wall's highest point as a symbolic space. This spot, as a symbol of exclusion, has become a place for talks, reflection, and connection between volunteers, visitors, and residents, challenging dominant perceptions. Their work confronts the widespread narrative that sees informal settlements as illegal or disorderly, instead highlighting how structural inequalities and the state neglect shape environmental and health vulnerabilities. And youth participation is transformative force. Youth played a central role in redefining environmental protection, expanding past movements with new political and ecological vision. The Lomas de Pamplona Collective operates as the intersection of environmental territory and health, preserving green areas that improve air quality and mental well-being, reducing environmental risk linked to erosion and climate instability, and especially strengthening community cohesion, an essential determinant of collective health, promoting physical activity through guided walks, empowering marginalized population to advocate for rights, infrastructure, and visibility. So here, environmental justice is a form of health justice, and protecting ecosystem is protecting people too. So this case of this collective shows that urban resistance emerges precisely where vulnerability is deepest, in the face of social and spatial segregation, environmental degradation, and institutional neglect. The community, especially its youth, has built new forms of care, stewardship, and territorial identity. From this experience, we can learn that cities must integrate environmental justice into urban planning. Ecological preservation is
inseparable from social equality. Public health depends on the health of ecosystems and the health of communities. Youth-led movements are key actors in reshaping our understanding of rights, territory, and, of course, sustainability. Thank you. Thank you so much, Aura, for sharing your experiences. Also, I'm so sorry I could not say welcome to you in the session, and I apologize for that, for missing that part. It's okay. Yeah. Thank you. So I just want to briefly mention about what they have shared their experiences about Wall in Lima and how the youth-led collective action has shaped the perspectives. But before that, I would like to also start, like in the starting, they mentioned ki although we are geographically very distant, but by and large, we share a lot of similar problems. And if we and when I was imagining how that wall has been constructed and how that wall has been, imagined a city, a different one city within a city, there are two different cities, quote unquote, formal and informal cities, and it's very important perspectives they have been able to build through the collective action of the youth. Um, they spoke about the wall of shame in the city of Lima, in the outskirts of Lima, and how the urban inequality has been, very visible by that wall. At the one side of the wall, there are parks, there are water bodies, and there are abundance of natural resources and abundance of shared spaces which are considered as a formal city or something like that. And at the other side, there is a scarcity of these very natural resources and these uh, very important resources in the city. The collective called the Lomas de Pamplona Collective. I hope I'm pronouncing it right. Yeah. It's okay. Yeah. So it's a youth-led resistance collective which have been doing activities like different citizen science activities, and one of the activities is a guided walk, and they have also shared how through that guided walk, and when you go on the top of that plateau, and you see that's the stark definition of how a city is imagined through different lenses. And that guided walk has been able to challenge the perspectives of formal and informal cities. So that was their experiences. I would like to translate for some of the audience who have been also joined us from India in Hindi. And औरा जी ने अपना जो लिमा के आउटस्कर्ट में जो एक दीवार है जिसे उन्होंने वॉल ऑफ शेम का नाम दिया है, जो एक शहर को दो अलग अलग हिस्सों में बांटती है, उसके बारे में अपना अनुभव शेयर किया, और कैसे उस शहर के जो खास करके जो युवा लोग हैं, उन्होंने सिटीजन साइंस के माध्यम से, गाइडेड वॉक के माध्यम से अपना एक ग्रुप बनाया, और इस माध्यम से कैसे उन्होंने लोगों के पर्सपेक्टिव में चेंज लाने का एक प्रयास किया। हम अक्सर, और प्रेजेंटेशन की शुरुआत में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो हमसे दक्षिण अमेरिका से जुड़ी है, और हम इंडिया में बैठे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि ऑल्दो हमारी मतलब हम देखें तो जोग्राफिकली हम बहुत दूर है, लेकिन हम जो समस्याएं जो साझा करते हैं वो लगभग कई 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 मतलब जैसे देखे जाए उसमें बहुत सा साम्यता है उन सभी समस्याओं में। तो और हम भी देखते हैं कैसे हमारे देश में भी कैसे अलग अलग जो शहरों में जिस तरह से एक इनइक्वलिटी हम देखते हैं, और कैसे एक शहर के भीतर हम अलग अलग शहर देखते हैं, चाहे वो शहर में जो अलग अलग सुविधाएं हो जो उपलब्ध होनी चाहिए उनको लेके हो, अर्बन स्पेसेस जैसे कि पार्क्स हो, तालाब हो, डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल स्पेसेस हो शहर की, और कैसे इन स्पेसेस में एक जो बंटवारा जो हम देखते हैं। और उन्होंने उन्होंने अपने
एक कलेक्टिव के बारे में बात की जिसका नाम है द लोमास दे पंपलोना कलेक्टिव, जो कि एक युवाओं का एक ग्रुप है जिन्होंने वहां पे सिटीजन साइंस के माध्यम से और कैसे गाइडेड वॉक के माध्यम से लोगों के पर्सपेक्टिव में और लोगों के जो सोच विचार है, उस शहर को देखने का जो नजरिया है, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल तरह से जिस हम किसी भी शहर को देखते हैं, वो कैसे उन्होंने उसमें बदलाव लाने का जो प्रयास किया है उसके बारे में उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। अगर आपके कोई भी सवाल है तो हम एक या दो सवाल ले सकते हैं, या फिर हम अगर आपका अभी कोई सवाल नहीं है तो हम सेशन के बाद में आपके सवाल लेंगे। इफ so that was about the presentation they have shared, and if anyone has any doubt, or if anyone wants to share their reflections, want to ask a question to the presenter, they can ask. We can take one question. If you don't have immediate question, then we can move to the next question. Karina has written in the chat box that I understand that urban spaces like parks, etc., are abundantly available in the formal city as opposed to the informal city on the other side of the wall of shame. Is the same for the other urban commons like services such as public transport and sanitation? Can we take this question? Yes, of course. We have these contracts between the both sides of the wall that it's just like she said, it's the old urban system, it's parallel in the behind the wall. Transportation, sanitary systems are different, are parallel, are like other type of self-governmental teams or groups are defining their another kind of governmental activities and services. So yeah, it's like a parallel state behind the wall. Thank you. मैं बाकी लोगों के लिए करीना ने हमें करीना ने और अजय से सवाल पूछा था कि हम देखते हैं जैसे फॉर्मल सिटी और इनफॉर्मल सिटी हम जैसे बोलते हैं, तो जो जैसे भी, और इसके पहले भी हमने जो अर्बन स्पेसेस के बारे में बात की थी कि कैसे चाहे वो तालाब हो, चाहे वो पार्क्स हो, ये सब चीजें हैं जो बहुत ही विजिबल होती हैं। क्या इनके अलावा भी जो सर्विसेज है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, सैनिटेशन हो गया, इन सब चीजों में भी हमें वो इनइक्वलिटी दिखती है या नहीं? और इसके बारे में हमारे जो प्रेजेंटर हैं और उन्होंने बोला कि जी हाँ, बिल्कुल दिखती है, क्योंकि मतलब वो भी शहर के जो बाकी सर्विसेज है इनमें भी वो झलकता है, और बहुत वो जो स्टार्क डिफरेंस है इनइक्वलिटी का, फॉर्मल और इनफॉर्मल शहर का, और जो भी अलग अलग सुविधाएं हैं जो किसी भी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देनी होती है वहाँ के सिटी ड्वेलर्स को, उसमें बहुत इनइक्वलिटी दिखती है, बहुत पैरेलल डिफरेंस हमें दिखता है। I would like to thanks once again Aura for joining us and sharing their experiences, and we hope to stay there for the rest of the presentations, and if there are any other questions from the other panelists and as well as the people who have joined us from different places, especially local screenings also, if they have any question, then we'll take those questions. Thank you once again. We will now move to the next presentation, which will be by Suyash. He'll be joining us from Maharashtra. Suyash was also the part of our team last time, and it's really nice to see him once again, and this time as a presenter sharing his experiences. His presentation is about the story of his group called Nanded Bloggers, and how a group of youth have reclaimed urban places through the collective action. इसके बाद सुयश जो कि हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं, अपना अनुभव साझा करेंगे, और कैसे महाराष्ट्र में नांदेड़ करके एक जगह है जहां से सुयश अपने नांदेड़ ब्लॉगर्स जो कि उनका ग्रुप है उसकी स्टोरी शेयर करेंगे, और कैसे युवाओं के एक संगठन ने शहर के जो
मतलब शहर जो है और शहर के जो कॉमन से शहर के जो साझा संसाधन है, शहर की जो जगह है, उसको कैसे उनके कलेक्टिव एक्शन से क्लेम किया, इसके बारे में वो अपना अनुभव शेयर करेंगे। ओवर टू यू सुरेश। Thank you, Ankush. Good morning to everyone. Uh, Please, next slide. Uh, as we talk about the plugging, plugging is a basic concept of while you are going to jog, you have to pick up the trash. But like the cities in India, we can't jog. Like too much trash on the roads, so we have to walk and pick up the trash. This initiative we started in January 2022 on the basic thought we have to clean our spaces, our city area. So we start this initiative by social media post, and we have a like a, attached with a good people and good youth in the upcoming drives. So till now we done the 200 drive in Nanded cities. From last 3 years we are doing this. Not any single Sunday we missed it. It's a basically volunteer based group. It's a there is no requirement of any registration and nothing. So you have to just come to uh, on Sunday on a specific location and you have to blog with us. You can next slide. So I will show some photos. Ankush, please next slide. You can see in this all photos the youth participation from the range of 4 years to the 82 years. Uh, we do our cleanup drives in cities area. We do our cleanup drives in gardens, local parks, on the side of rivers. We also do the different activities like next slide, please. Like this Kachara Man. Basically, Kachara Man, we do the this activity on the special occasion or something to attract the people and aware the people about how the plastic will talk you if we throw on plastic on the road, how plastic will feel it. We try to connect emotionally with the people with this Kachara Man activity. Also we do another activities like a chalk of shame. uh, it's a activity that we just go on the street and just highlight the trash. Like there is some water bottle, we just highlight with the chalk. That's people will attract and they see how much trash on the roads. And also we try to write some slogans around the trash, like जिसमें अगर हिंदी में बता पा रहा हूँ तो अगर एक पानी बॉटल गिरा हुआ है तो हम उसको ऐसे बड़ा सा सर्कल बना के उसके बाजू में लिखते हैं कि बुझ गई क्या प्यास। मतलब सिर्फ प्यास थी तब तक तुमने बॉटल साथ में रखी, बाद में तुमने फेंक दिया। ऑल्सो सम अदर स्लोगन्स जो लोगों को और भी अट्रैक्ट करे, जैसे कि अगर कोई स्प्लिट करता है तो उस पे हम ऐसे कुछ भी गाना के तौर पे ऐसे उसको लिख देते हैं कि बलम पिचकारी रोड पे क्यों मारी। लाइक this words can attract people. Also people laugh and also people think about this. So these two activities we majorly do in the cities, also do on the various occasion like Independence Day, Republic Day, with municipal corporation, with district magistrate and other NGOs in Nanded. Also we do the cleanup drives with schools and colleges. Next slide, please. We also do the plantation program in the monsoon season. मानसून में कचरा उठाना ज़्यादा मतलब इजी नहीं हो जाता है पानी की वजह से, तो हम उस टाइम पे प्लांटेशन ड्राइव्स अरेंज करते विद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट. ऑल्सो डू द ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑन द वेरियस ओकेजन. तो उसके साथ ही स्पेशली नांदेड़ जो है गोदावरी नदी पे सिचुएटेड है, तो गोदावरी नदी के भी घाट्स पे क्लीन अप ड्राइव्स अलग अलग तौर पे हम अरेंज करते हैं, जिसमें इस फोटोज में आप देख पा रहे हैं जो वीड है वो निकाला जा रहा है. जो वीड है ये एक पर्पल कलर का फूल होता है जो बेसिकली वाटर बॉडीज पे दिखता है, बहुत जल्दी से आता है. बट इसका प्रॉब्लम पानी में ये होता है कि ऑक्सीडेशन की कमी हो जाती है, सनलाइट पानी तक नीचे तक नहीं पहुंच पाता, इसकी वजह से बहुत सारी मछलियां मरती है. ऐसे केसेस नांदेड़ में गोदावरी घाट्स पे बहुत बार हुए थे.
तो हम ट्राई करते कि वो भी वहां से एक्सट्रैक्ट करे और क्लीन करे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ पेपर कट्स है, जैसे एक 2 साल पहले हमने 100 ड्राइव कंप्लीट किया था। तब हमने नांदेड़ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, नांदेड़ के एसपीज इनके साथ और गुरुद्वारा बोर्ड के साथ एक बड़ा सा प्रोग्राम रख के वहाँ पे गोदावरी घाट पे ही क्लीन अप ड्राइव अरेंज किया था। सेम थिंग साउथ साउथ इंडिया में सबसे बड़ी एक यात्रा होती है मालेगांव यात्रा। वहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक क्लीन अप ड्राइव्स और एक नुक्कड़ नाटक का भी प्लान किया था, जो कि इस लोकमत टाइम्स न्यूज़ का हेडिंग था, वो आप देख सकते हो। ये नांदेड़ ब्लॉगर जब से शुरू किया है तो लोग हमें पूछते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है और क्या चेंजेस आया है। तो हम इतना मैं हमेशा बोलता हूँ, एज अ फाउंडर मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमने लोगों में सिर्फ 1% चेंज लाया है। तो पीपल लोग पूछते हैं कि कैसे 1%, तो मैं बोलता हूँ कि जनरेशन टू जनरेशन एक थिंकिंग है कि कचरा रोड पे ही फेंकना है। तो उसको मैं ऐसे ओवरनाइटली या 2-3 सालों में चेंज नहीं कर सकता हूँ। बट मैं ट्राई करता हूँ कि जो आने वाला यूथ है, जो बच्चे हैं अभी छोटे स्कूल्स के बच्चे हैं, उनको मैं इससे ज़्यादा और कोशिश करता हूँ कि उनको ज़्यादा कनेक्ट करें। इसलिए हम बार बार स्कूल्स जाके अवेयरनेस ड्राइव करते हैं और स्कूल्स को भी कनेक्ट करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसी का एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा मेरे घर से। मेरा छोटा नेफ्यू है 6 साल का, 5-6 साल का। वो वो कभी भी मतलब वो एवरी संडे आता ही है व्लॉगिंग करने, बट वो कभी भी अगर कुछ खाता है चॉकलेट या चिप्स वगैरह, तो वो डस्टबिन में डालता है और आने के बाद वो सबको बताता है। तो वो इम्पैक्ट उस पर अभी से हो रहा है कि ये जो कचरा है वो डस्टबिन उसके लिए यूज करना है। अभी फिलहाल ये यूथ इनिशिएटिव वॉलेंटरी बेस्ड है, तो हम सिर्फ क्लीन अप ड्राइव्स पे फोकस कर रहे हैं। इसका फ्यूचर गोल हमने ये सोचा है कि नांदेड़ के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके साथ कुछ यूनिट ट्राई करके कुछ उसको रिसाइकल तौर पे कुछ हो सके, तो वैसा कुछ करने का सोच रहे हैं। अभी वॉलेंटरी बेस्ड है, तो इसको कोई भी फंडिंग या कुछ नहीं रहता है। सिर्फ यूथ अपना टाइम देता है और उसी के तौर पे हम ये पूरा काम करते हैं। Yes, I think I done. Maybe next slide. Yes, thank you. Thank you, Ankush. Thank you, Suyash. Thank you so much for the presentation. Yeah, so as we have seen, Suyash has shared his story of a group called Nanded Bloggers, and initially he mentioned how this is a volunteer-based group inspired by the action in the Sweden, and it's a very important efforts by the youth and how they have see their city, how they have imagined their city and the place the public places in their city, and they have formed a group called Nanded Bloggers because they have formed it in Nanded, a city in Maharashtra. And since then since then they have been working tirelessly, different cleanup drives at the parks and the lakes and the other urban spaces through this group, joined by a group of youth volunteers. And every Sunday they have been working for this. Suyash has mentioned that they haven't missed a single Sunday from that. And in monsoon, when they can't do these activities, then they have done the plantation activities and other activities. At the same time, as he mentioned, that Nanded is a city which is on the banks of the river Godavari. So in monsoon, if there are high tide of water, and when a lot of things have been flowing along the river, along the banks of the river Godavari, they have also cleaned that. At the same time, he has mentioned about how the problem of water hyacinth is very persistent in the lakes of Nanded, and they have also undertaken the drive to clean up those lakes through their collective action. Suyesh has also briefly mentioned about um, when he talk about this group to the other people, and many people often ask him that Ki, how you have been able and how you have been successful, in changing the mind of the people, or the initiative they have undertaken. And he mentions that he says that only 1%, because this is something we have inherited for a long time, and it will take some time to unlearn that and to work on that.
but at the same time he and his group is very confident about that they will achieve a success one day, and they will see their city, their public spaces a clean and in a good shape. At the same time, Suresh has also briefly mentioned about a very famous fair in Maharashtra called Malegaon Yatra, and how they have done different awareness activity, street plays, and go to the people, and they have discussed the importance of having that yatra plastic free. So this was the presentation from Suyash. I would like to also translate this in Hindi for the audience who have been joined to us. But thank you, Suyash, and thank you so much for sharing your Thank you, presentation. Ankush. And we also wish all the best to this group. And it's been a wonderful work that you are doing. At the same time, you are trying to you are trying to make people think about the things they are doing, their habits, and like making them rethink about, like, very casually we take these all urban spaces so granted, be it the parks, be it the lakes, even the roads, and like you said ki, you throw the bottle, you throw a water bottle very casually, and then you draw a line around it, chalk of shame. And when the next person passes through that, and when they see that, and definitely they will feel the shame ki, oh, I have done this also in the past. And I think holding people accountable for that, and making them think for their action is very important, also when it comes to keeping our public spaces clean. मैं इसका हिंदी में अनुवाद करना चाहूंगा। सुयश हमारे साथ महाराष्ट्र के नांदेड़ से जुड़े थे, और उन्होंने अपने जो उनके जो दोस्त है, उन्होंने जो एक वहाँ के युवा लोगों ने जो एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है नांदेड़ ब्लॉगर्स, उसकी उन्होंने स्टोरी शेयर की है। सुयश ने बताया कि नांदेड़ ब्लॉगर्स शुरू करने का जो आइडिया है वो ओरिजिनली स्वीडन से आया है, और वैसे ही उन्होंने अपने शहर में नांदेड़ ब्लॉगर्स करके एक ग्रुप शुरू किया। सुयश ने बताया कि पिछले कई सालों से वो इस ग्रुप के फाउंडर भी हैं, तो उस वजह से उन्होंने बताया कि जब से नांदेड़ ब्लॉगर्स इसने नांदेड़ में काम करना शुरू किया है, तब से उन्होंने एक एक भी रविवार मिस नहीं किया है। और मतलब जब बारिश के समय में जब वो अपने बाकी काम नहीं कर पाते हैं, जैसे चाहे वो पार्क्स का क्लीनिंग हो, या फिर जो तालाब है वहाँ का क्लीनिंग हो, रास्तों की साफ सफाई हो, तो उस समय पे वो लोग अब अलग एक्टिविटीज लेते हैं, जैसे रक्तदान हो गया, अलग जगह पे श्रमदान हो गया, गोदावरी रिवर जो है जहाँ से जो नांदेड़ शहर जिसके किनारे पे बसा है, वहाँ का क्लीनलीनेस ड्राइव हो गया, ये सब चीजें वो करते हैं। सुयश ने एक जो काम उनका जो ग्रुप है नांदेड़ ब्लॉगर्स, जो काम वो करते हैं उसमें कैसे वो लोगों को भी इंक्लूड कर सके, इसके बारे में भी उन्होंने अलग अलग माध्यम से इसके बारे में भी उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। बहुत बार बहुत ही कैजुअली और ज्यादा कुछ सोचे समझे हम ऐसे ही रास्तों पे, पार्क्स में प्लास्टिक की बोतल फेंक देते हैं, कचरा कर देते हैं। सुयश ने बोला कि उनका ग्रुप एक चौक से उसको एक सर्कल करता है, और हिंदी में लिखता है, लो बुझ गई प्यास। और एक बहुत इंटरेस्टिंग एक तरीका है लोगों को अपनी अकाउंटेबिलिटी समझाने का, कि आप ये नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सुयश को बहुत बार लोगों ने पूछा है कि आप जो काम कर रहे हैं इतने सालों से, क्या लगता है आपको, आप कितना सफल हुए इसमें, और आपको मतलब आपकी क्या राय है जो काम आप कर रहे हैं। और सुयश ने बोला कि 1% ही है जो मैं अब तक लोगों में हम लोग अब तक लोगों में बदलाव ला चुके हैं, लेकिन हम बहुत ही विश्वस्त हैं और बहुत ही आशावादी है कि आने वाले समय में लोग इन सब चीजों के बारे में सोचेंगे, और अपने शहर के अपने जो पब्लिक स्पेसेस है उसको गंदा नहीं करेंगे, उसको स्वच्छ रखने में वो भी प्रयास करेंगे। सुयश ने बोला कि ये जो चीजें हैं वो बहुत लंबे समय से हमने बहुत ही कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बोलिए उसको इनहेरिट की है, और इन सबको छोड़ने में, इन सबको जाने में, और इन सबका हमें इन सब पे हमें काम करने के लिए बहुत समय लगेगा।
सुयश ने एक और उदाहरण बताया कि महाराष्ट्र में मालेगांव करके एक जगह है जहाँ पे बहुत फेमस यात्रा होती है। वहां पे उन्होंने कैसे अपने ग्रुप के साथ सिर्फ मालेगांव की ही यात्रा नहीं, बट अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं वहां पे वो कैसे अपने ग्रुप के साथ जाते हैं, और वहां पे चाहे वो स्ट्रीट प्ले के माध्यम से हो, लोगों से बात करके हो, अवेयरनेस ड्राइव के माध्यम से हो, कैसे लोगों में उनका जो ग्रुप है उसके काम के बारे में समझाते हैं, और कैसे लोग उनके ग्रुप से जुड़ सकते हैं, कैसे वॉलंटियर कर सकते हैं, कैसे उनके ग्रुप की मदद से या फिर जो काम वो लोग कर रहे हैं उस उनकी मदद से कैसे अपने शहरों को, अपने पब्लिक स्पेसेस को, चाहे वो पार्क्स हो, तालाब हो, या फिर बस स्टॉप हो, शहर की कोई भी जगह हो, उनको कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने हमसे चर्चा की। अगर किसी का कोई सवाल है तो हम एक या दो सवाल ले सकते हैं, और अगर किसी के सवाल नहीं है अभी इमीडिएटली तो अच्छा, हमारे हमारे पास ऑलरेडी दो तीन सवाल है सुयश। उसमें से हम एक सवाल लेंगे जल्दी, बिकॉज हमारे 6 प्रेजेंटेशंस हैं, और बाकी बचे हुए दो सवाल हम शिवा का, और एक और जो सवाल है वो हम बाद में लेंगे। सुयश, एक सवाल है, इज थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स? व्हाट डू यू थिंक should be done differently to ensure the commons are protected from the waste problem? आ, मुझे ऐसे लगता है कि आ, यही काम करना पड़ेगा जो करके आ रहे हैं, और थोड़ा ज्यादा बड़े स्केल पे करना पड़ेगा। छोटे स्केल पे जितना कर पा रहा हूँ मैं एक शहर में, मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अगर स्प्रेड होता है ये चीज, ये जो आने वाली जो जनरेशन है, अगर वो ये समझ ले कि ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो अभी जनरेशन आपने आगे जो चल रहा है वो इस प्रॉब्लम को बहुत कॉमनली देखता है, क्योंकि मैं मेरे घर में ही देखता हूँ बड़े लोग कचरे को इतना मतलब नहीं देखते, वो छोड़ दो फेंक दो ऐसा हो जाता है। बट अगर जो आने वाला यूथ है, आने वाली जो जनरेशन है, अगर इस पे थोड़ा सा भी विचार करे और इस सारी चीजों पे काम करे, तो मुझे लगता है कि वो स्पेसिस ट्रेजेडी जो होने वाली है उससे अपन बच सकते हैं। धन्यवाद सुयश। सुयश ने बताया, सुयश has mentioned that how if the youth, the young generation, especially in cities, have taken this problem seriously, they can save their urban spaces from becoming a tragedy of the commons. Suyesh, I would also like to know if, like you have mentioned, that you go to the different places, and have you been able to talk to the such youth groups in the other cities, and how have and if you have been, then how was your interaction with the other groups in the city, and if they are doing similar kind of activities, or if they want to do these kind of activities, or if you have helped them to form groups like that? And like you said, you have been working very dedicatedly, and I think it's very important to have such such youth-led collective actions group in the cities. And how have been your experiences, if you have been able to discuss with other people? यस यस अंकुश, जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे सिटीज में ऐसे ग्रुप काम करते हैं। मुंबई में काम करता है, पुणे में काम करता है, संभाजीनगर में काम करता है। नांदेड़ के शुरू होने के बाद दो ग्रुप्स ने मतलब हम उनके साथ इंटरेक्ट कर पाए और उन्होंने स्टार्ट किया। एक यवतमाल शहर है और दूसरे एक लातूर शहर है, जहाँ पे नांदेड़ के बाद वहाँ के दो लोगों ने वो शुरुआत की है। जैसे यवतमाल से प्रियंका नाम की एक लड़की है जिसने शुरू किया है, शी इज ए डॉक्टर, तो उसने वो शुरू किया है, वो भी लगभग 2 साल से वो काम करते आ रही है। वैसे ही लातूर में भी कर पा रहे। इन सारे ग्रुप्स का एक कॉमनली ग्रुप बन चुका है, एक सोशल प्लेटफॉर्म पे हम मिलते हैं। ज्यादा बातें नहीं हो पाती क्योंकि अ, शहर का इशू वही है, मतलब अलग कुछ नहीं, बट वही है जो एक्टिविटीज जो कर रहे हैं। जैसे कचरा मैन नांदेड़ में हमने शुरू किया, तो वो अलग अलग शहरों में अभी हो रहा है। चौक ऑफ शेम पहले दूसरे शहरों में होता था, वो हम नांदेड़ में करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, तो उसके थ्रू बातें चलती हैं। Okay, thank you, Suyesh. So Suyesh has also mentioned about his experiences of interacting with other groups, especially in different cities, and that's what I have also asked him. Ki, how was his experience interacting with such other groups who engage in similar activities?
and he has mentioned that like we share the similar problems, and they try to meet on the digital platforms, try to learn from each other, and try to undertake a different kind of initiatives and activities which one group is taking in the other cities. Like he has mentioned about Kachra Man. He said he used to he saw the Kachra Man initiative they have been doing in their city has been now also been replicated by the other groups, and as well as he said their group also interacted with a group of youth from the other cities, and how they are doing chalk of shame if they found a litter on the road, and they are also have been taking that particular idea into their action. So this was from Suyesh. Suyesh, I would like to request you to stay until the presentations, and Yes, then Ankush. we will have, if there are any further questions, Yes. and we will have a group discussion later on. Yes. Thank you, Ankush. Thank you once more, Suyesh, for joining us and sharing your experiences. After that, we have been joined by Amol Sakarkar ji from Maharashtra. Amol ji, आप हैं वहाँ पे? यहाँ पे? सर अमोल के साथ महेंद्र हूँ सर। हाँ, अच्छा सर महेंद्र जी। हाँ सर एक्चुअली सर मराठी चलेगा कि हिंदी में बात करना पड़ेगा? चलेगा, अगर आपको मराठी में बात करनी है तो आप मराठी में बात कीजिए, मैं हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा, नो ओके प्रॉब्लम। सर, थैंक यू फॉर हाँ हाँ, परमिशन। whatever our presenter is comfortable in speaking in. ओके सर, थँक यू। या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या सगळ्या लोकांना, सगळ्या सहभागीदारांना यवतमाळच्या प्रयास यवतमाळ संस्थेकडून स्वागत। मी प्रयास यवतमाळ आणि प्रयास वन याबद्दल सांगतो। प्रयास यवतमाळ ही जी संस्था आहे स्पेशली पर्यावरण आणि संरक्षण क्षेत्रामध्ये अग्रेसर असणारी संस्था आहे, आणि ही संस्था सुरुवातीला जी हे झालेली आहे, नेक्स्ट स्लाइड। संस्था जेव्हा स्थापन झाली, ऍक्च्युली संस्था सुरुवातीला फक्त एक इन्फॉर्मल असा ग्रुप होता। संस्था कामाला अशी रजिस्ट्रेशन म्हणून झालेली नव्हती, मात्र रजिस्ट्रेशन करायला आम्हाला म्हणजे थोडा तांत्रिक जी बाजू होती त्यासाठी रजिस्टर करायला लागली ती 2018 मध्ये। तर हा जो ग्रुप आला होता, हा जो ग्रुप एकत्रित आला, त्यांनी असं ठरवलं की आपण समाजाचं काहीतरी देणं लागतो, पर्यावरणाचं काहीतरी देणं लागतो। या भावनेनं समविचारी लोकांनी एकत्र येऊन निस्वार्थपणे कार्य करीत निसर्ग संवर्धन व पर्यावरण सुरक्षेचा घेतलेला ध्यास म्हणजे प्रयास ही टॅगलाईन समोर ठेवून प्रयासचे सगळे समविचारी लोक एकत्र आले, आणि हा प्रयास हा एक विचार आहे, आणि म्हणून हे सगळे कामाला लोक आले। निस्वार्थपणे पर्यावरणपूरक कामं करण्याचा एक गट सुरुवात झाला, आणि हे काम सुरू झालं 2013 मध्ये, 13-14 मध्ये। सुरुवातीला याच्यामध्ये आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाला हा एक कार्यक्रम प्रयासनी फोकस केला। त्याच्यामध्ये समाजाला प्रेरणा देणारे जे लोक होते त्यांची प्रगट मुलाखतीचा कार्यक्रम घेतला, ज्याच्यातून समाजाला आणि विद्यार्थी मित्रांना किंवा आणखी इतर लोकांना प्रेरणा मिळेल, जे लोक त्याच्यातून प्रेरणा घेऊन नवीन कार्य करू शकतील अशा लोकांच्या प्रगट मुलाखतीचा कार्यक्रम प्रयासने सुरुवातीला सुरू केला। त्यानंतर संस्था 2018 मध्ये 1860 आणि 1950 या कायद्यानुसार नोंदणीकृत झाली, आणि संस्थेजवळ आज ATGचं आणि टेवलेचं दोन्ही रजिस्ट्रेशन आहे। प्रयासने सुरुवातीला जी काम सुरू केलं 2013 पासून, त्याच्यामध्ये सुरुवातीला माती बंधारा पुनर्निर्मिती म्हणजे शहराच्या बाहेरचे जे माती बंधारे होते ज्याच्यातनं पाणी वाहून जात होतं, त्या बंधाऱ्याची पुनर्निर्मिती करणे, त्याच्यातनं पाणी वाहून जाऊ नये म्हणून काम करणे, असं काम सुरू केलं। त्यानंतर मिशन डीप निवळा हा आमचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता। मिशन डीप निवळा त्याच्याबद्दल मी पुन्हा सविस्तर बोलतो। हा एक प्रकल्प हाती घेतला होता। त्यानंतर मिशन हरितमाळ हा एक प्रकल्प हाती घेतला। त्यानंतर पाऊस आणि पाणी संकलन, पावसाचं पाणी जे सांडून वाहून जातं ते वाहू नये म्हणून त्याच्यासाठी पाऊस पाणी संकलनाचा कार्यक्रम घेतला। याच्यामध्ये प्रभागात कार्यशाळा घेतला, त्याच्यासाठी नगर परिषदेची मदत घेतली, नगरसेवकांचा सहभाग घेतला, डॉक्टर सचिन पावडे यांचं तंत्रज्ञान वापरलं, आणि शासकीय कार्यालय, खाजगी निवासस्थान या सगळ्यांचं जे वरचं छपरावरती पडणारं पाणी आहे हे जमिनीत मुरवण्याचं काम संस्थेने सुरू केलं। सोबतच कॅरीबॅग निर्मूलन आणि प्लास्टिक नियोजनाचं काम सुद्धा संस्थेने सुरू केलं। संस्थेला काम करत असताना एक चांगली फळी बनत गेली। यवतमाळातल्या लोकांची निस्वार्थ भावनेने एक मोठी फळी त्या ठिकाणी निर्माण झाली, आणि त्याच दरम्यान
सत्यमेव जयते वॉटर कप हा स्पर्धेचा सुरू झालेली होती. या स्पर्धेत सुद्धा संस्था सहभागी झाली आणि यवतमाळ शहरालगत बरबडा नावाचं गाव आहे. त्या गावामध्ये या स्पर्धेसाठी संस्था त्यांच्यासोबत सहभागी झाली आणि त्या ठिकाणी वॉटरशेडचं काम संस्थेने केलं. तसंच कळंब तालुक्यामध्ये तासलोड नावाचं गाव आहे. त्या ठिकाणी सुद्धा संस्थेने याचं सत्यमेव जयतेचं काम सुरू केलं. त्यानंतर संस्थेचा आणखी एक प्रोजेक्ट होता, एक मूठ धान्य पक्ष्यांसाठी. उन्हाळ्यामध्ये पक्षी फिरतात, त्यांना खायला मिळत नाही, पाणी मिळत नाही. मग त्यावेळी त्या पक्ष्यांना सपोर्ट व्हावा यासाठी सगळे जे किराणा दुकानदार आहेत त्या किराणा दुकानदारांकडनं त्यांचे जे सांडलेलं पडलेलं जे धान्य आहे किंवा असे डोनर्स आहेत ज्यांच्याकडनं ते एक मूठ धान्य देऊ शकतात, अशा सगळ्यांकडनं एक मूठ धान्य गोळा केलं आणि पक्ष्यांसाठी ते ठेवलं, विविध ठिकाणी ठेवलं. तिथं पाण्याची सोय केली, पक्षी त्या ठिकाणी येऊन आपलं धान्य खाऊ शकतो अशा ठिकाणी. त्यानंतर मिशन आधार नावाचं एक संस्थेने कार्यक्रम सुरू केला. त्याच्यामध्ये मिशन आधार याचा अर्थ की जे अनाथाश्रम आहे, वृद्धाश्रम आहे, दिव्यांगाचे वसतिगृह आहे किंवा एक खालच्या कॅटेगरीतल्या लोकांची जी काही संस्था आहेत त्यांना अन्नधान्याची नियमित तशी तुटवडा असतो. तर यवतमाळ शहर याचं एक उत्सवप्रिय शहर आहे. या शहरामध्ये गणेश उत्सव मंडळ भरपूर आहेत, दुर्गा उत्सव मंडळ भरपूर आहेत. या सगळ्या दुर्गा उत्सव मंडळांमध्ये, गणेशोत्सव मंडळांमध्ये अन्नदानाचा कार्यक्रम चालू असतो. 10 दिवस कार्यक्रम सुरू असतो. मात्र 10 दिवसानंतर तो कार्यक्रम जेव्हा संपतो तेव्हा मोठ्या प्रमाणामध्ये धान्य त्या ठिकाणी शिल्लक असतं. मग संस्थेने हा विचार केला की मग हे धान्य कुठेतरी पडून राहणं किंवा वाया जाणं, त्याच्यापेक्षा संस्थेने हे धान्य त्या संस्थांना, त्या मंडळांना रिक्वेस्ट करून हे धान्य कलेक्ट केलं, स्वतःकडे कलेक्ट केलं आणि असे जे वसतिगृह आहे, अनाथाश्रम आहेत किंवा दिव्यांगाचे वसतिगृह आहेत त्या ठिकाणी हे पोचून दिलं, जे की त्यांची थोडी निकड आपण भागवू शकू. त्यानंतर कोरोना लॉकडाऊन काळामध्ये सुद्धा मानव सेवेचं कार्य केलं. धान्य किट अशा जमा केल्या आणि झरी नामनी तालुका आमच्याकडे एक रिमोट तालुका आहे, त्या तालुक्यामध्ये आम्ही हे सगळं पोहोचवलं. खरं तर निळोणा जे मिशन डीप निळोणा जो हा कार्यक्रम आम्ही सुरू केला होता, हा कार्यक्रम 2015 ते 2017 या काळात आम्ही सुरू केला. सलग 2 वर्ष एकूण 170 दिवस आम्ही कार्य सुरू ठेवलं. 1,40,000 ट्रॉली गाळ आम्ही त्या ठिकाणावरनं काढला. ही जी परिस्थिती, ज्यावेळी आम्ही काम सुरू केलं, यवतमाळमध्ये 15 दिवसाआड नळाला पाणी यायचं, लोकांना पाण्यासाठी दारोदार फिरायला लागायचं, प्रचंड टंचाई यवतमाळमध्ये होती. त्या काळात संस्थेने हे काम सुरू केलं आणि हा जो 1,40,000 ट्रॉली जो गाळ निघाला तो परिसरातल्या 5 गावातल्या शेतकऱ्यांना वाटला, त्यांच्या शेतावरती तो गाळ पडला. याच्यामुळे 2 फायदे झाले. एक तर निळोणा धरणामध्ये पाणी साठा वाढला, त्याच्यातला जो गाळ निघाला, हा पाणी साठा जो वाढला तो पाणी साठा 29 दिवसांचा होता. 29 दिवस पाणी त्या ठिकाणी साठवू शकलं आणि यवतमाळकरांची जी हे आहे, तहान आहे ती भागली. त्यानंतर हा जो निघालेला गाळ जो आम्ही शेतकऱ्यांना दिला, त्यामुळे परिसरातल्या गावातल्या महेंद्रजी, एकच मिनिट, सॉरी तुम्हाला इंटरप्ट करतोय. स्लाइड कधी चेंज करायची ते सांगा. नाही, मी ऍक्च्युली सांगितलंच नाही. हे मी त्या स्लाइड वरतीच होतो. आपण स्लाइड पुढे घेऊन घेतलेला आहे. ओके तर पहिल्याच स्लाइड वर थांबायचं आहे पहिल्या का स्लाइड आपल्याला? वरती. राईट. येस ओके, येस हा, येस ठीक येस. आहे. आणि ठीक आहे, काय हरकत नाही. ओके. हा थोडा बॅकग्राऊंड आहे, नंतर आपण याला हे प्रयास फंडचा आहे. त्याच्यावरती हा ओके सर. हा जो निघालेला गाळ होता, म्हणजे 2 गोष्टींचा फायदा झाला. एक तर 29 दिवसाचा पाणी साठा निळोणा धरणामध्ये वाढला, त्याच्यामुळे यवतमाळकरांची तहान भागली. त्यानंतर हा जो गाळ निघाला होता शेतकऱ्यांना जो मिळाला, त्याच्यामुळे त्यांच्या शेतीची उत्पादकता वाढली आणि यवतमाळमध्ये जे दुर्भिक्ष पाण्याचं होतं त्यामुळं एक संस्कृती निर्माण झाली, जाणीवजागृती झाली की बाबा पाणी वाचवून आपण आता वापरलं पाहिजे. ही एक त्यावेळी अशी एक परिस्थिती निर्माण झाली. आणि हे करत असताना, म्हणजे हे सगळं सुरू असताना, पर्यावरणाचा ध्यास घेतलेले लोक एकत्र असताना मग 127 दिवस 2 वर्ष सतत हे काम सुरू होतं. पण पावसाळा आला की मात्र काम बंद राहायचं. मग या वेळात काय करायचं? संस्था पर्यावरण प्रेमी होती आणि संस्थेला कळालं की पाणी जर आपल्याला पाहिजे, नियमित पाहिजे, तर पाण्याचा साठा वाढवणं गरजेचं आहे, पाणी जमिनीत जिरणं गरजेचं आहे. म्हणून वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम हाती घेतला. जो हरितमाळ नावाचा प्रोजेक्ट होता तो आम्ही हातीमध्ये घेतला आणि शहरांमधले जे रस्त्याच्या दुतर्फा झाडं लावायची आहे, ती दुतर्फा झाडं संस्थेने किमान 400 ते 500 झाडं लावली. त्यानंतर शहरातल्या नगर परिषदेला आणि सोसायट्यांच्या मध्ये असलेल्या ज्या मोकळ्या जागा आहेत, त्या मोकळ्या जागांमध्ये आम्ही लोकांना विनंती करून त्यांना झाडं लावायची परवानगी घेतली आणि त्या ठिकाणी झाडं लावले. असे जवळपास 1,500 ते 2,000 झाडं आम्ही लावले. मात्र अडचण अशी येत होती
की काही ना काही कारणामुळं आमचं दुर्लक्ष थोडं झालं, की त्या झाडाचं वृक्ष संवर्धन आमच्याकडनं होत नव्हतं आणि त्या परिसरातील लोक त्या लक्ष देत नव्हते किंवा एखादी वॉल त्या ठिकाणी बांधायचं काम असलं की नेमकं ते झाड तोडलं जायचं. शिवाय एखाद्या वेळी रस्त्याचं काम आलं तर रस्त्याच्या विस्तारीकरणामुळं ते झाड आमचं वाया जायचं. मग असं ह्या अडचण आली, पण ती अडचणच आमच्यासाठी एक मोठी आमची ध्येय बनली. कारण या अडचणीमुळे आम्ही अनेक विचार करायला लागलो. पर्यावरणाचा ध्यास असलेल्या सगळ्या लोकांनी अशा एका जागेचा शोध घ्यायचा प्रयत्न केला, की बाबा त्या ठिकाणी आम्ही झाडं लावू शकू आणि ते झाडाचं संरक्षण आम्ही स्वतः करू शकू. त्या ठिकाणी लोकांचा हस्तक्षेप नसेल. हे करत असताना मग प्रयासवन उदयाला आलं आणि प्रयासवनाचा एक म्हणजे असं आम्हाला लक्षात आलं, की वन विभागाकडली जर जागा आपण घेतली तर त्या ठिकाणी आपण चांगल्या पद्धतीने वन आपण डेव्हलप करू शकू. आपण त्या ठिकाणी छान पद्धतीने आपला हे होईल. मग वन विभागाशी आमचा करार झाला आणि तुम्हाला सांगायला मला या ठिकाणी आनंद होतो, की महाराष्ट्रातला पहिला हा पायलट प्रकल्प जो प्रयास संस्थेला वन विभागाच्या जागेवरती त्रिपक्षीय करार 7 वर्षासाठी लीजवर जमीन देऊन आमच्यासोबत झाला. त्याच्यामध्ये वन विभाग, महाराष्ट्र शासन हे होतं, दिलासा घाटंजी हिची संस्था ही होती आणि प्रयास यवतमाळ असे आम्ही 3 त्या ठिकाणी ट्राय पार्टी अग्रीमेंट झालं आणि मग आम्हाला 25 एकराची जागा शासनाकडनं मिळाली, फॉरेस्टकडनं मिळाली आणि ती शहरालगत मिळाली. अगदी शहरापासून 3 किलोमीटर अंतरावरती आम्हाला ती जागा मिळाली आणि त्या ठिकाणी शासनाने, फॉरेस्टने आम्हाला 6500 पर्यंत झाडं लावा असं बंधन घातलं. पण त्याच वेळी संस्थेने संकल्प असा केला, की जरी शासनाने आपल्याला 6500चं बंधन घातलं असेल तरी सुद्धा आपण 10,000 झाडं लावायचा संकल्प करूया. मग त्यावेळी आम्ही 10,000 झाडं लावायचा संकल्प केला. मला तुम्हाला या ठिकाणी आणखी सांगायला आनंद होतो, आम्ही आजपर्यंत त्या ठिकाणी 15,500 झाडं लावलेली आहेत आणि त्यातील आज काही ना काही कारणामुळे काही झाडं जातात. त्यातली आज जवळपास 97% झाडं म्हणजे 14,066 झाडं त्या ठिकाणी आज जिवंत आहे आणि ते आम्ही त्याचं संरक्षण करतो आहे. आणि ही जे आमचं शासनासोबतचं जे करार झाला त्याच्यामध्ये शासनाने आम्हाला बंधन घातलं होतं, की हे सगळं करायला आम्हाला शासन एकही रुपया देणार नाही. शासनाच्या कुठल्याच योजनेतनं आम्हाला पैसा घेता येणार नाही. आम्हाला केवळ आणि केवळ फक्त लोकसहभागावरतीच हा प्रकल्प राबवायचा होता. लोकसहभागच आमचा याचा गाभा होता. मग आता हे असं करताना लोकांकडनं पैसे घेऊन इतकं मोठं काम करायचं म्हटलं तर थोडंसं आमच्यापुढे एक प्रश्न होता. पण आमची सुरुवात झाली 2020ला आम्हाला सुरुवात झाली आणि 26 जून 2020 रोजी प्रयासवनाचा त्रिपक्षीय करार झाली. तत्कालीन पालकमंत्री संजय राठोड आणि तत्कालीन दादा भुसे हे जे होते कृषी मंत्री यांनी त्या ठिकाणी येऊन वृक्षारोपणाचं उद्घाटन केलं आणि प्रयासवनाचा हा जो भाग आहे, हा भाग आहे, हा 25 एकराचा हा चढ उताराचा भाग आहे. या संपूर्ण याला तारेचं कुंपण केलं आणि या कुंपणाला लगत त्याला जे याच्या भाषेमध्ये, फॉरेस्टच्या भाषेमध्ये फायरलाईन असं म्हणतात. त्या फायरलाईनच्या आजूला आणि बाजूला म्हणजे अलीकडे आणि पलीकडे जलसंधारणासाठी आम्ही ट्रेंचिंग पण केल्या. ट्रेंचिंग करून पाणी जे वाहून जात होतं ते पाण्याला आम्ही त्या ठिकाणी थांबवलं आणि मग आम्हाला मुख्य जी अट त्याच्यातनं घालून दिलेली होती ती लोकसहभागाची. त्याच्यासाठी संस्थेने 2 संकल्पना बाहेर आणल्या. एक वृक्ष पालकत्व आणि श्रमानंद ह्या 2 संकल्पना बाहेर आणल्या. त्याच्यामध्ये वृक्ष पालकत्व हा आमचा चांगला एक कन्सेप्ट त्या ठिकाणी असा आला, की एखादा व्यक्ती ज्याला मला झाड लावायचं आहे असं असेल तर त्यांनी 1,000 रुपये आम्हाला द्यायचे आणि त्या 1,000 रुपयामधून आम्ही 7 वर्षापर्यंत त्याचं झाड जे आम्ही जगवू, त्याचं संवर्धन करू, याच्यासाठी आम्हाला त्यांनी 1,000 रुपये द्यायचे. याचा प्रोपगंडा मग आमच्या जे सोबत जोडलेले जे सगळे जे सदस्य होते त्यांनी मग याचा प्रोपगंडा केला आणि शहरातून फार मोठ्या प्रमाणात आम्हाला याचा चांगला सहभाग मिळाला. लोक 1 झाड घ्यायला लागले, 10 झाडं घ्यायला लागले, काही लोक 50,000 झाडं घ्यायला लागले. असे जे लोक आहे 50-50 झाडं घेणारे लोक आहे हे आमचे वृक्षपालक व्हायला लागले. या ठिकाणी सुद्धा असं झालं, की केवळ फक्त यवतमाळातनं लोक वृक्षपालक झाले नाही, ते यवतमाळच्या बाहेर असलेले महाराष्ट्रातले इतर जिल्हे आहेत त्यातनंही लोकांचा सहभाग आम्हाला मिळायला लागला. यासोबत बाहेरचे जे राज्यातले जे लोक आहेत जे यवतमाळातनं बाहेर राहायला गेलेले आहेत त्या लोकांचा पण सहभाग मिळाला. इतकंच नव्हे तर परदेशातल्या लोकांचा पण आम्हाला सहभाग मिळाला आणि आमचे वृक्षपालक हे आता युनिव्हर्स झाले, म्हणजे आता पूर्ण जगामध्ये आमचे वृक्षपालक आहे. श्रमानंद ही जी संकल्पना आम्ही आणली, जे लोक पैसा देऊ शकत नाही पण ते वेळ देऊ शकतात, श्रम देऊ शकतात, त्या लोकांना श्रमानंदासाठी आम्ही त्या ठिकाणी बोलवलं. काही मशिनरी वाले होते, काही आम्हाला ट्रॅक्टरची गरज पडली, काही आम्हाला JCBची गरज पडली, त्या
त्या लोकांनी त्यांचं JCB ट्रॅक्टर आम्हाला त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलं आणि त्यातून आम्हाला त्यांनी मदत केली. अशा पद्धतीने आम्ही त्या ठिकाणी 97% झाडं लावू शकलेलो आहोत. आता नेक्स्ट स्लाइड घ्यायला हरकत नाही. नेक्स्ट स्लाइड. हे लोकसभा मिळवताना आम्ही आमचं काम बघून त्या ठिकाणी आम्हाला FDCM जी फॉरेस्टची CSR कंपनी आहे त्यांनी आम्हाला मियावाकीसाठी सपोर्ट केला. ICICI फाउंडेशन आहे त्यांनी आम्हाला सोलर पंपसाठी मदत केली. अर्बन बँक आहे, स्टेट बँक आहे, बालाजी इलेक्ट्रो स्मेल्टर्स आहे. या सगळ्या लोकांनी आम्हाला त्या ठिकाणी सपोर्ट केलेला आहे. आपण बघताय या चित्रांमध्ये की या ठिकाणी अशा पद्धतीने दर रविवारी दररोज शाळेचे लोक कुठल्या याचे लोक त्या ठिकाणी येतात आणि समाधान करतात आणि श्रमानंदाचा आनंद घेतात. अशा पद्धतीने रोज त्या ठिकाणी लोक येतात. नेक्स्ट स्लाइड. प्रयासवनामध्ये हे जरी आम्ही करत असलो तरी आपण या स्लाइडच्या उजव्या बाजूला बघतोय एक आपल्याला पिक्चर दिसत आहे ज्या ठिकाणी एका साईडला आपले सीडबॉल बनवत आहे, एका ठिकाणी आपले काही त्याच्यातले ते पार्ट दिसत आहेत ते एक लोकेशन मार्क आहे. हे करत असताना लोकांना अट्रॅक्ट केल्याशिवाय आमचा निधी वाढू शकत नव्हता. म्हणून आम्ही त्या ठिकाणी काही अशा संकल्पना राबवल्या त्या लोकांना अट्रॅक्ट करू शकेल. मग आता आपण बघतोय बाजूला आम्ही त्या ठिकाणी पंचवटी वन हा परिसर डेव्हलप केला ज्याला आपल्या इतिहासाचा आधार आहे, भारतीय संस्कृतीचा आधार आहे, वेदांमध्ये त्याचा उल्लेख आहे. ती पंचवटी आम्ही त्या ठिकाणी तयार केली. राशीवन आम्ही त्या ठिकाणी तयार केलं. नवग्रह वन आम्ही त्या ठिकाणी तयार केलं. नक्षत्र वन आम्ही त्या ठिकाणी तयार केलं. शिवझोन आता प्रोसेसमध्ये आहे. जैविक खत निर्मिती सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी तयार केली. जैवविविधता प्रकल्प ज्यामध्ये बायोडायव्हर्सिटी जी आहे ते सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी तयार केलं. फुलपाखरांसाठी एक वेगळा परिसर आम्ही त्या ठिकाणी तयार केला. फुलपाखरू वाढतील, त्याला कीटक वाढतील, पक्षी वाढतील आणि ही जी नैसर्गिक अन्न साखळी आहे ती अन्न साखळी जोपासण्याचा प्रयत्न आम्ही त्या भागामध्ये केलेला आहे. आणि नंतर मग आम्ही त्या ठिकाणी गुलबाटिका पण केलेली आहे. त्यामध्ये 253 प्रकारची झाडं त्या ठिकाणी आम्ही लावलेली आहे. आणि मग हे जे असं करत असताना हा जो परिसर आहे आता सध्या मियावाकीचा ट्रेंड आलाय. जॅपनीज कन्सेप्ट आलेली आहे. कमी जागेमध्ये जास्त झाडं घनवन त्या ठिकाणी आपण तयार करू शकतो. तो मियावाकीचा ट्रेंड आल्यानंतर आम्ही हा परिसर सुद्धा त्या ठिकाणी तयार केलेला आहे. अशा पद्धतीने आम्ही त्या ठिकाणी सगळ्या संकल्पना आम्ही त्या ठिकाणी राबवल्या. हे करायसाठी आम्ही काही समित्या पण त्या ठिकाणी केल्या. ग्राउंड समिती केली, वृक्ष लागवड समिती केली, पाणी समिती केली, संरक्षण समिती केली, निधी संकलन समिती केली, तांत्रिक समिती केली. हे सगळं करत असताना आमच्या असं लक्षात आलं आपण हे करतोय, प्रयास हे सगळं करतोय, पण प्रयास नंतर काय तर मग कुणीतरी पुढची री ओढायला पाहिजे. म्हणून इको क्विज नावाचा आमचा एक प्रकल्प आम्ही त्या ठिकाणी लॉन्च केला. इको क्विज म्हणजे काय तर हे जे जल, जंगल आणि जमीन या विषयावरती संस्थेने एक पुस्तिका निर्माण केली आणि ही पुस्तिका 7व्या, 8व्या, 9व्या आणि 10व्या वर्गांसाठी आम्ही ती दिली आणि त्यांनी ते पुस्तक वाचलं पाहिजे, आत्मसात केलं पाहिजे आणि कृतीत आणलं पाहिजे. यासाठी त्याच्यावरती आम्ही कॉम्पिटिशन घेतली, स्पर्धात्मक परीक्षा घेतली. त्याच्यामुळं पोरांनी ती पुस्तक वाचलं. हे पुस्तक मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही विषयांमध्ये केलं. त्याच्यामुळं मराठी इंग्रजी शहरातल्या सगळ्या शाळांमध्ये आम्ही ते प्रमोट केलं आणि त्यांच्याकडून एक स्पर्धा घेतली ज्याचा फायदा असा झाला की मुलं त्या ठिकाणी यायला लागले. आणि नेक्स्ट स्लाइड घ्यायला हरकत नाही. याचा फायदा असा झाला की या ठिकाणावरती अनेक मान्यवरांनी त्या ठिकाणी आम्हाला व्हिजिट दिला. आपण बघतात आहे की या फोटोमध्ये माननीय महामहिम राज्यपाल भगतसिंगजी कोश्यारी यांनी सुद्धा त्या ठिकाणी आमचं काम बघून मदत केली, भेट दिली. तत्कालीन मंत्री त्या ठिकाणी भेट दिली. मान्य सुधीरभाऊ मुनगंटीवार महाराष्ट्राचे मंत्री आहेत, संजयभाऊ राठोड महाराष्ट्राचे मंत्री आहेत, दादा भुसे मंत्री आहेत, मदन येरावार आमदार आहेत. यासोबतच सगळे IAS ऑफिसर आहे, MPSC कॅडरचे लोक आहेत, IPS कॅडरचे लोक आहेत. अशा अनेक मोठमोठ्या लोकांनी त्या ठिकाणी यवतमाळात आल्यानंतर या प्रयासवनाला भेटी दिलेल्या आहेत. आमचा पुढचा असा मानस आहे की आता पुढे प्रयास यवतमाळ शहरात जसं मियावाकी परिसर आता प्रयासवनामध्ये आम्ही डेव्हलप केलेला आहे, हा मियावाकी परिसर यवतमाळ शहरामध्ये ठिकठिकाणी डेव्हलप व्हावा, मोठा व्हावा, याची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात करावी असा आमचा एक मानस आहे. प्रयासवन जे यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये आता सुरू आहे असं प्रयासवन इतरही जिल्ह्यांमध्ये सुरू व्हावं हा आमचा एक मानस आहे. समाजासाठी निरोगी आणि प्रदूषणमुक्त वातावरणाची निर्मिती करण्याचा आमचा मानस आहे. त्याच्यासोबतच विद्यार्थी, पुरुष, महिला आणि विविध संस्था आणि मंडळांसाठी पर्यावरण शिक्षण जागृती वर्ग घेण्याचा आमचा मानस आहे. जैविक खत निर्मिती आणि त्याचे वर्ग घेण्याची वाढवावे, हे वर्ग घेऊन ही वापर वाढवावा यासाठीचा आमचा एक मानस आहे. सेंद्रिय शेतीची बद्दलची जागृती करणं, शेतकऱ्यांचे वर्ग घेणं हा सुद्धा आमचा एक मानस आहे. आणि या परिसरामध्ये जे आढळणारे प्राणी आहेत, पक्षी आहेत यांचा
ओळख सगळ्यांना व्हावी, त्याचा एक ओळख वर्ग घ्यावा, त्याचं प्रदर्शन भरवावं, अशी आजचा माणूस आहे. सोबतच मेळावे, चर्चासत्र, व्याख्यानं अशा पद्धतीचे कार्यक्रम त्या ठिकाणी राबावे असा एक आमचा माणूस आहे. या सगळ्या कार्यक्रमामध्ये आमच्यासोबत यवतमाळकर नागरिक आहेत, इतरही नागरिक आहेत, बऱ्याच लोकांचा सपोर्ट आहे. आज या ठिकाणी आम्हाला आपण आमचं मत सादरीकरण करण्यासाठी संधी दिली त्याबद्दल आपलं सगळ्यांचं धन्यवाद आणि थांबतो. नेक्स्ट. नेक्स्ट स्लाइड आहे का? अच्छा. हे एक आधीचं जे पेपर प्रेझेंटेशन होतं, पेपरमध्ये जी बातमी आली, हे आपल्या माळरानावरती फुलले प्रयासवड, म्हणजे जी आता या साईडला बघताय की माळरान होतं, त्या ठिकाणी कुठल्याच प्रकारचं झाड उगवलेलं नव्हतं, पण आमच्या श्रमातनं या ठिकाणी प्रयासवड फुललेलं आहे. त्याचं दखल घेऊन पेपरनी सुद्धा त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्हाला प्रसिद्धी दिलेली आहे. त्यातलं हे पेपर कटिंग लावलेलं आहे. नेक्स्ट. अशा पद्धतीने शाळकरी विद्यार्थी त्या ठिकाणी आम्हाला वृक्षारोपण करायला किंवा वृक्षाचं संवर्धन करायसाठी मदत करतात. बाजूला जे दिसतं चित्र ते सुरुवातीचं चित्र आहे, 2020चं चित्र आहे. ते त्या ठिकाणी अशा पद्धतीच्या असलेल्या जमिनीला आम्ही आता प्रयास म्हणून डेव्हलप केलेला आहे. नेक्स्ट. असे वर्ग सुद्धा आम्ही या ठिकाणी घेतो. मुलं येतात, त्यांना आम्ही त्या ठिकाणी या पद्धतीने मार्गदर्शन करतो, पर्यावरणाबद्दल सांगतो, मियावाकीबद्दल माहिती देतो. अशा पद्धतीने वर्ग सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी घेतो. नेक्स्ट. नेक्स्ट प्लीज. थँक्यू सर. धन्यवाद महेंद्रजी. अमोलजी आहेत का तुमच्यासोबत? आहेत अमोल सर. येस त्यांना काही बोलायचं आहे का? अमोलजी, तुम्हाला काही बोलायचंय? ठीक आहे. महेंद्र भाऊनी सगळे मुद्दे व्यवस्थित मांडले. त्या संदर्भात प्रयासनी विशेष असे या आधारित आम्हाला म्हणजे आम्ही पुढेही असे वन तयार करू शकलो. दिलासा नावाच्या संस्थेने केले, पुढे आम्ही त्याचा प्रसार करून राहिलो आणि अशी जी नैसर्गिक वनं तयार झाली पाहिजे यासाठी आम्ही कार्य केलं आणि त्याच्यातही आम्हाला यश आलं. अशी 2-3 ठिकाणी या प्रकारची वनं आता तयार झालेली आहेत. हो, मला फक्त 1-2 क्लॅरिफिकेशन पाहिजे होते. निळवणा धरणातून तुम्ही किती गाळ काढला? म्हणजे तो जरा आकडा 40,000 ट्रॅक्टर आहे तो गाळ. अच्छा. ओके. जो करीबन 1,20,000 क्युबिक मीटर होतो तो. राईट. आणि हो, आणि मला वाटतं पोलीस विभागाची लोक पण होती तिथे श्रमदान करायला येतात वाटतं. येस. अच्छा. पोलीस विभाग आहे, स्काउट गाईडचे आहेत. त्या राईट. सगळ्यांचा म्हणजे आपल्याला यवतमाळकरांच्या सगळ्या शाळा आहेत, राईट. त्यांचे विद्यार्थी तिथे येतात. दर हप्त्याला आमचं श्रमदान चालतं. त्या अनुषंगाने तिथे विद्यार्थ्यांची संख्या आता भरपूर येत आहे. येस. पर्यावरण शिकण्यासाठी ज्या विद्यार्थ्यांना म्हणजे क्लासरूमचं जे शिक्षण आहे त्याच्यापेक्षा प्रत्यक्ष झाड बघून जे बरोबर. शिकायला भेटतं त्याच्यासाठी बरोबर. त्यांना शाळा आता आणतायत तिथे याला. हो. ओके. धन्यवाद अमोलजी आणि महेंद्रजी. आणि माझ्यासोबत प्रमोद सगळ्यांचं यादवजी आहे. प्रमोद यादवजींचं सुद्धा धन्यवाद. नमस्कार. नमस्कार. मी सगळ्यांसाठी हिंदी आणि इंग्रजीत एकदा ट्रान्सलेट करतो, कारण आपल्याला बाकीच्या ठिकाणून सुद्धा लोक जोडलेले आहेत. ओके, थँक्यू. आणि पण थँक्यू सो मच पुन्हा एकदा. हा, नाही, बोला. हा सर, एक ज्या प्रयास वन मध्ये आपण थोडस कसं सॉइल वॉटर कन्झर्वेशन ही ऍक्टिव्हिटी आपण तिथं म्हणजे केलेली आहे, हो. जेणेकरून आपल्याला उताराचा भाग आहे, आंदोलन हो. पूर्ण साईड जे आहे वर खाली आहे, काही पहाडी भाग आहे, काही खोल आहे. तर हो, अशा हो. ठिकाणी आपण तिथं जसं सॉइल आणि वॉटर कन्झर्वेशनची ऍक्टिव्हिटी सुरुवातीला वरच्या साईडला आपल्याला प्लांटेशनच्या मधात आपण CCT घेतलेली आहे. हो. तिथं ओगळ आहे, तिथं आपण LBS लूज बोल्डर स्ट्रक्चर टाकलेले आहे. येस. एक्झिस्टिंग जे ऑलरेडी त्या फॉरेस्टनी केलेले जे काही माती बंधारा आणि सिमेंट बंधारे आहे त्याच्यातले राईट. गाळ काढणे आणि तो गाळ आपण खताच्या माध्यमातून आपण झाडाला वापरणे असं. आणि आउटर साईडलाही आपण थोडस ते नाल्यामध्ये जे गाळ आहे ते सगळं राईट. काढून ते वॉटर स्टोरेज कॅपॅसिटी आपण थोडी वाढवलेली आहे तिची. हो. आणि त्यामुळे आम्हाला जे आमचे आजूबाजूचे फॉरेस्टचे नर्सरी एक बाजूला आहे त्या विहिरीची पातळी वाढली
ते एक असं त्यांचा नर्सरीचे जे लोकांचा आहे एक त्यांचा एक Feedback. असा आम्हाला त्यांनी सांगितलं की आमच्या जे मार्च मे मध्ये एंडिंगला जे पाणी कमी होतो आता आमचं ते झालेलं नाहीये. हा एक आम्हाला तिथं म्हणजे त्याचा बेनिफिट झालेला आहे. Nice. आणि सर एकदम वाळवंट असल्यामुळे आता आपण काय झालं जेव्हा झाडं लावले भरपूर आणि आपलं त्यामुळे काय झालं गवताचं प्रमाण वाढलं. Oh, nice. गवताचं प्रमाण वाढल्यावर काय झालं सर तिथं सॉइल इरोजनचं जे मात्रा होती ते आता एकदम कमी झाली. सॉइल हो. इरोजन नाहीसा झाला एकदम आणि Nice. तिथं एवढं भरपूर गवत आहे की हो. आपल्याला ते गवत कापून ते गोशाळामध्ये आम्ही पाठवतो Wow. तिथचा. तर तो एक आपल्याला सॉइल इरोजन जे आपला उद्देश होता किंवा माती कंजर्वेशन आणि वॉटर कंजर्वेशन तो एक उद्देश आपला तिथचा एक लहानच्या जागेवर 25 एकर मध्ये आपण तो साध्य करून दाखवला. Right. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच. मी तुमचं जे प्रेझेंटेशन होतं आणि तुम्ही तिघेही लोक जे बोलले त्याचं इंग्रजीत आणि हिंदीमध्ये थोडंसं भाषांतर करतो आणि नंतर जर कोणाचे जर काही प्रश्न असतील, कोणाचे जर काही डाऊट्स असतील तर ते सुद्धा विचारतील आणि सेशनच्या शेवटपर्यंत तुम्ही थांबा अशी विनंती करतो. ओके. I would like to thank our presenters Amolji, Mahendraji, and Anand also for facilitating this. They have shared their. Since the presentation was in Marathi, they have joined us from Yavatmal district of Maharashtra. The presentation was in Marathi, so I would like to translate that in Hindi and English for the presenters, for our participants who have joined from the different parts. This was the presentation about Prayas 1, and Prayas, it's a Marathi word, and in English it means efforts. A forest which is, came by the efforts of its people, and like we have discussed earlier also, that how the city dwellers, how the people have imagined their public spaces, and here in the Yavatmal district and in the Yavatmal city, a group of people have identified a place, discussed with the forest department and the respective and the concerned authorities, and they ask if they can give them some parcel of land to restore that and to take a conservation activities on that land. And they have said during COVID in 2020 they have signed an agreement with Forest Department, Maharashtra Forest Department, State Forest Department. They have been allocated 25 acres of land, and how they have taken a different types of soil conservation, water conservation, and plantation activity on that particular stretch of the land. Just before that, मी याच्या आधी पण मी प्रयासवनाबद्दल वाचलं होतं आणि दर्ने सर वगैरे त्यांच्या संभाषणातून ऐकलं आणि मी बऱ्याचदा प्रयासवनाचं जे गुगल मॅपवर आहे ते मी भरपूरदा बघितलंय ना. आता मी तुमच्या प्रेझेंटेशनच्या वेळी सुद्धा जेव्हा तुम्ही फोटोज दाखवले आणि मला पटकन लक्षात आलं की हा तो उपक्रम आहे आणि गुगल मॅपवरून सुद्धा खूप सुंदर दिसतं ते पूर्ण फॉरेस्ट. या सो this was an example of how the people have came together, and they have through their collective actions have been able to restore the land, and they improve the quality of the soil, to stop the soil erosion, and through the different kinds of restoration activities. In 2020 they have started their work, and they said first thing they have undertaken was to do different kind of water conservation activity and water harvesting activities. And they have also briefly mentioned about one of the NGO called Pani Foundation, and how in collaboration with Pani Foundation and with the efforts of the youth of the respective locations, they have undertaken activities like continuous contour trenches, LBS, and other activities, to stop the flow, to restrict the flow of the water from that particular plateau, and to stop the soil erosion. Through that, followed after that, they have planted 15,500 trees in the particular patch of land, and
they were very proud to say that they have been able to save 97% of the trees, which was 14,066 trees, and which is a very good uh, number, to be honest, because after the plantation also it's very difficult, it's difficult to maintain those plants, and they have been through their continuous activities and continuous efforts, they have been able to have been nurture those plants. They said ki through this group they have also did a drive to taken a drive to provide a safe and good drinking water to the people of the surrounding places, and how so there's a dam near the city called Nirona Dam, and how they have been have how they have and how this group has taken an activities for the cleanliness of that particular water body, and how this group has been able to through that through these activities have been able to work on that particular thing. They said ki in the last 7 years, many people have came forward to help this initiative, and one of the initiative, interestingly, they spoke about ki like we have a guardians. So they said ki they have introduced a system called ki okay, you can be a guardian of a particular plant, and you give us 1,000 rupees, we will buy a plant, a sapling, and we will take care of that plant forever. And in last 7 years they for the next 7 years, and since that activity, many people from Yavatmal city, from Maharashtra, India, and also they have said ki also from the foreign countries, many people have been joined them to support this initiative. They have also mentioned if someone is not able to help this initiative monetarily, they can just support this through Shramadhan, which is basically through their labor, through their collective efforts. In the picture, we have also seen that how different groups of people, be it a youth group, be it a college students, school students, and also a police personnel also joined them to to contribute into this, giving their labor and time and support. They said ki to make this activity more sustainable and to make this effort more sustainable, they thought ki okay, what after Prayas 1 now? And now they have also made a booklet in Marathi and English and Hindi language, in Marathi and English languages for the students, so that they can get more more information about the different biodiversity, different types of ecology, and they try to engage these youth groups and the school students into these activities. And this is also very important. This is also very important important part of citizen science initiative, that how they have onboarded and how they have engaged college students and school children also into this initiative. They organize quiz competitions and other activities in that. They said ki this initiative was lauded by the governor of Maharashtra as well as the agricultural minister of Maharashtra. They said ki, hello. Is my voice breaking? No. Okay. They said ki they were discussing with the people, and they were also sharing their experiences ki what people spoke about this initiative. And many people have said ki in May, by the starting of the May, the water level of the surrounding region used to the water table used to decrease, and like they have mentioned also, they have taken in different types of water conservation, water harvesting activities like CCTs, LBS, Gabion dams, etc. And how these different activities in that particular slope and in that particular land have been, have been very instrumental in increasing the water table of that particular place. And they also spoke about how this has also increased the water storing capacity. Have been able to to restrict the soil erosion and the which used to wash out earlier.
And when they were presenting, I was also thinking about there has been a lot of plantation, there has been a lot of forest, there has been a lot of planting of the different saplings. But I was thinking, okay, is there a grass also in this? And they have also mentioned about how because of these activities and how because the soil erosion has stopped and how because there has been the soil moisture and the water table have been able to increase in that particular land. There's also a grass now, and they said ki the amount of grass they have seen in the recent years is such that ki matlab they are getting a lot of grass, so they are now also selling it outside. In the same place, they have been also able to build a different spaces. Like one of the thing they mentioned about how there is now a park for the butterflies also, and they have seen a different species and different types of butterflies coming there and being part of that ecology. So this was their presentation. मैं इसका जल्दी ही हिंदी में अनुवाद करना चाहूंगा. ये कहानी थी महाराष्ट्र के यवतमाल से. प्रयासवन एक ग्रुप है जिन्होंने यवतमाल के पास जो एक पहाड़ है वहां पे कैसे उन्होंने एक 25 एकड़ जमीन का जो टुकड़ा है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ एक एग्रीमेंट करके लिया, और वहां पे उन्होंने कैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला कि हम यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग और सॉइल इरोजन रोकने की एक्टिविटीज करते हैं. आपके साथ मिलके हम काम करते हैं, और 2020 से सतत प्रयास वो उस जगह पे कर रहे हैं. उन्होंने चाहे वो CCTs हो, LBS हो, ऐसे अलग अलग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना के एक्टिविटीज करके वहाँ का सॉइल इरोजन रोकने का, वहाँ का वाटर टेबल इंक्रीज करने की एक्टिविटीज की उन्होंने यवतमाल के बाकी लोगों को भी इस इनिशिएटिव के साथ जोड़ा. और जैसे कि नाम है प्रयासवन, मतलब एक ऐसा फॉरेस्ट है जो लोगों के एफर्ट से बना है, और वाकई में वो बहुत से लोगों को इस प्रयास में शामिल कर पाए हैं. उन्होंने बताया कि कैसे 2020 में जब उन्हें 25 एकड़ लैंड मिली थी, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन्हें बोला था कि आप यहाँ पे इतने प्लांट्स लगाइए, और उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम इससे ज्यादा लगाएंगे. और उन्होंने लगभग 15,500 वहाँ पे प्लांट्स लगाए थे, जिनमें से 14,067 प्लांट उन्होंने हमें नंबर भी दिया है, और वो बहुत खुश थे कि 97% प्लांट्स जो थे वो हम लोग उन्हें जिंदा रखने में, उन्होंने नर्चर करने में हम कामयाब हुए हैं. उन्होंने जैसे गार्डियन होते हैं वैसे ही उन्होंने एक चीज बताई कि आप किसी एक प्लांट के गार्डियन भी हो सकते हैं. अगर आप हमें 1,000 रुपए देते हैं तो हम आपके नाम का एक सैपलिंग लेंगे, हम वो प्लांट लगाएंगे, और उसका आने वाले 7 सालों तक हम उस प्लांट का ख्याल रखेंगे. और इसी प्रयास से उन्होंने बोला कि इसी प्रयास के साथ उन्होंने बोला कि कैसे उन्हें देश और दुनिया भर से भी बहुत लोग जुड़े हैं. चाहे वो यवतमाल महाराष्ट्र से तो लोग हैं ही, लेकिन भारत के विभिन्न हिस्सों से और देश के बाहर से भी बहुत से लोग इस प्रयास से जुड़े हैं. उन्होंने बताया कि प्रयास वन के बाद वो क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं. तो उन्होंने बताया कि वो सिटीजन साइंस के माध्यम से, चाहे वो स्कूल चिल्ड्रंस हो, स्टूडेंट्स हो, उन सबको कैसे साथ में लेके इस प्रयास वन का और इस पूरी इनिशिएटिव का हिस्सा बनाते हैं, उस बारे में उन्होंने चर्चा की. मैं आनंद, अमोल जी और महेंद्र जी, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ. धन्यवाद सर जी हमसे जुड़ने के लिए. आणि प्रेझेंटेशनच्या नंतर पण काही प्रश्न असतील लोकांचे, तर त्यासाठी तुम्ही थांबा. येस. ठीक आहे. हा, येस. वेळ पण थोडा कमी आहे, तर आपल्याला पुढच्या प्रेझेंटेशनला Okay. जावं लागेल. ओके. थँक्यू. Thank you so much once again, sir. Now we will move to the fourth presentation, which will be this will be Nivedita ji, right? Yeah. Nivedita ji, are you there? Yeah, I'm here. Yeah. I'm here. hello. Yeah. First of all, we welcome you to the community conference, and thanks for joining us. This will be from Telangana. Nivedita Tuliji will be
sharing their experiences, how they have reimagined urban ecology through community and children. And in this particular, under this theme also, and in this session also, we are seeing how different groups of people in the urban spaces are coming together. And one of the important thing I have seen is how in the other initiatives also all of these groups have been able to include children's and the students. And we are also looking forward to this presentation. Over to you, Nivedita ji. I can't see the slides. So how can I see the slides so that I know where we are? Yes, just a second. We will share the screen. There's some technical issue. Just give us a minute. No problem. Yeah. You have joined us from where, Nivedita ji? Actually, this was my work in Hyderabad for the past year, and Okay. now I'm based in Sambhajinagar, Maharashtra. Okay. Yeah. Also, I'm sorry, I haven't asked you before, but how do you pronounce this? Kritter? How do you pronounce that? Kritrabad, Kritrabad, Yeah. Okay. Right. Kritrabad. So, a stone sat still with the water, grass, and dirt, and it was where it was in the world. एक पत्थर था जो घास और पानी और मिट्टी के साथ पड़ा हुआ था, और वो वहीं का वहीं था जहां वो था. Next slide. Just give us a second. Okay. ये है मेरा प्रोजेक्ट खिटराबाद. लेसन्स फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ अर्बन इकोलॉजी. लेसन्स मतलब सीखें जो मुझे मिली और अर्बन इकोसिस्टम्स के कोनों में जो काम किया गया है उसके बारे में है. और ये जो आपको आर्टवर्क सारा दिख रहा है, दिस इज मेड बाय द चिल्ड्रन आई वाज वर्किंग इन विद. And this project was supported by 3 organizations: the Prakriti Research Fellowship by EcoSattva, Hyderabad Urban Lab, and UCAN Earth Educator Fellowship. Next slide. So the project had many different elements. The first was the placemaking at Premnagar Rock Garden, which was a nature learning hub. So basically, this was an abandoned space that was, filled with broken glass and garbage, and placemaking was the exercise of basically translating the space into a learning center around the neighborhood's ecology. Then I also built a community of locals around urban ecology and a traveling nature museum on urban ecology, and conducted workshops at a historic lake in Hyderabad, and also trained an intern in the same processes. So the image that you're seeing is a quiet moment from the summer nature school, which I organized at Premnagar Rock Garden. The boy on the far left is saying shh to make sure that the Tickle's blue flycatcher does not fly away. And the children are seated on a rock, and you can see that they have painted on it during a session on belonging. So I used a lot of theoretical frameworks because my work brings together academic research and actual on-ground work. So like there are frameworks like anthropologist Anna Singh writes about कि देखो, world में we are in a world where the habitat is completely destroyed. So do we sit and cry about it, or do we see what is left and take what is left as a starting point and work around it? The second thing is Darwin Comes to Town is work by urban evolutionary biologist Menno Schilthuisen, who says that rather than lamenting past pristine ecosystems are destroyed, we have to look at urban ecosystems, see how they are different, and understand that nature has been building novel urban ecosystems for the future. And then the third framework is called queer ecology, and that breaks categories like native, exotic, rural, urban, past, present, human, nature, and you work together without the binarification. And stop organizing the world into binaries and you work together. So these were the frameworks that informed my work.
So the anchor site was Prem Nagar Rock Garden, which is an abandoned half an acre park in Hyderabad, in Prem Nagar, which is a low income neighborhood there. And this park had been in a damaged state, even though it had been used intergenerationally by people. Increasingly, it was becoming inaccessible to children due to the glass shards, and it was basically abandoned and under noticed. So the idea was to revitalize this place and space and make it into a place again. So there were different elements, worked with the bureaucracy, the municipal corporation to do repair work there. The local school donated swings. The municipal corporation got signboards. We set up a cricket club, made a sand pit for the children, put the garbage bins, and did community events wherein the people actually began reconnecting with the space. And as you can see in the repair work image, the children put their own hands on the wall, indicating their ownership and stewardship of the space. But you cannot do urban ecological placemaking with just physical interventions. The other interventions were to cultivate that ecological identity. The same way we have a social identity, a cultural identity, a linguistic identity. We wanted to work on building an ecological identity for the children. Like, how do they have this connection with a place? Because if you're able to connect with the ecosystem in one place, then you can connect with the ecosystems in other places. And love is the beginning of action. And if you don't love, because the reason why we are experiencing this sense of disconnection and this ruination of nature is because children in urban spaces who grow on to be in powerful positions or just work in the cities, they have a complete sense of disconnection from nature. And in my case, when I was a child, I was taught by my dad in local parks and empty lots to understand non-human nature, and that is the reason I have been able to do this. And I wanted to cultivate this in more children. So if we can move to the next slide. So how did I actually do this? Is what we are looking at. So yeah, so in order to do the physical interventions, these are the stakeholders that I engaged with, from the municipal corporation to the local children. And the thing was like talk. Bug the bureaucracy, keep having these conversations with the children and ask them what they want. Because, I wanted to do urban ecology, but the children wanted swings. So we have to make both work. I can't just be there and do plantations and, exclude the children. So it was a very iterative process wherein the different stakeholders were in conversation as we made these interventions. So, in order to cultivate that sense of belongingness with their own neighborhood ecology, a summer nature school was organized at the Rock Garden. Pamphlets were distributed, the children were taken to different sites around the city, also, like KBR Park, but also developed this embedded understanding that, oh, this is our park, this is our neighborhood. Here is a beehive. And, seeing somebody like me actually, or seeing my team connected to the ecology, they could actually talk about these things. Because the thing is, children will always notice a bug and all of that, but they will not think that it is worthy of noticing unless and until more people are are in dialogue with them and also acknowledge them noticing these things. So we worked with mud, we worked with rocks, we worked with leaves, all different kinds of things within that very tiny park, within that very abandoned space, in a small place in Hyderabad, in the middle of the bustling city. And the next slide. And then also there is a very important ecosystem, which is a lake called Mir Alam Talab, which is an old water body in Hyderabad. I also did similar workshops there. And there the children were more connected with the local ecology, living around the lake. And so not only did they, not only did I teach them, they taught me a lot, which is why this presentation is called Lessons from the Margin of Urban Ecology, because I learned a lot about how the children see this ecosystem, how they understand the creatures they encounter there. And, just having fun with them, and also, telling them it's okay to acknowledge non-human nature around them.
And then also we collected, objects and created. So like we collected seeds and pods, and this is Trisha Manda from Ashrim Premji University who interned with me. So not only did we collect the seeds and pods and feathers, we also managed to use clay to create some of this so that we could take it to the children, so that they not only have a snapshot of what is available in the park, they can also see this traveling nature museum which is coming to them. Like you can see a rockagama, which is a native lizard of a reptile of the Deccan region. And you can see the cotton mealybug, and you can see the butterflies made from origami, and all of these different creatures. And intern training was an important element because we used art to document this and then translated it with the children and, made art with the children, made scrapbooks around this one small park so that the children no longer feel that this park is not, mm, you know, or the ecology of this park is meaningless. It is small, the scale is small, but the meaning to these 20 children or these 40 children, all the children who live near the park, that place is their home. And, that is where, they can cultivate their own ecological identity. And then also I translated some of the concepts that I was working with through a reading circle around the city of Hyderabad, so that it wasn't just that, I was working with these children, I was also transplanting these ideas among others in the city. And we read all sorts of books on ecological education and urban ecology. And just, the children and I and Trisha, we made a lot of art and just, visually, documented the ecology of this city. Noticing and just understanding that something is there. It's not a black hole. Urban nature is not a black hole the way we imagine it. There's a lot that is still left, and that lot has to be documented. And the thing is, the survival of this hinges on our ability to recognize it. अगर कोई नोटिस ही नहीं करेगा कि कितना कुछ बचा है, we're all like सब खत्म हो गया है, nature is over in cities, and only look at nature outside cities, then what we'll do is we will create a situation wherein whatever is left is not recognized, because what is left has the potential to connect urban people with nature, with the non-human nature. So you have to build that connection somehow. And so, I worked in that rock with those children, and it felt like a blink, but it was also an age, and they kept speaking with me about, where am I from? Because I'm from Delhi, and then I belong to a family of partition refugees who migrated in 1947 from what is now Pakistan. Gota Fatehgarh, Gujranwala, and Lahore. But the thing is, I don't have the sense of community anywhere. I don't feel like I belong anywhere. I am not from, or it's just that I have to build those roots. So I worked in Hyderabad, and right now I'm in Sambhaji Nagar, and I am trying to find that kinship with the urban ecosystems and with the people there somehow, because there is no default location for me to do my practice. So I'm still in the process of figuring it out. But I think this park, that stone that was set in place, it was like a moment for me and the children. And it was like an age, something that they'll remember, they'll hold on to, because the stone will still remain there. The rocks, they date back 2 billion years. So, this is a sense of belonging that I have, this tether to that park for myself and for those children. And next slide. And the stone was an island, like it may go under the water someday and, go under a wave. And next slide. And it will be a memory for them, they might forget the same way that I have forgotten. I forgot for a long time the things I learned in my childhood. But the next slide. But it might be a memory and it might fade, but it will always be there, even if it is. And that core understanding, that ecological identity that I have instilled in these children, it will stay with them. And they just might,
it just might impact somebody. It just might change the way in which they see urban ecosystems. It just might change something. And yeah, because yeah. And so this is me as a child, you know, and the stone was always, because this is how I learned about urban ecology, uh, in the places around me as a child. And this is how I taught more people about it. And it will always be there, even if it goes underwater forever. And I'm doing this work in Sambhaji Nagar right now, which is a very different scale of work. Like it's a whole river and a watershed. And that's really intimidating. Because how do you sort of translate these academic ideas on the ground? I mean, you can translate them in a park, but at the scale of larger ecosystems. But I guess you just keep going, even when people tell you you don't belong to the landscape because you don't have those kind of ancestral ties to anywhere. But as somebody very kind told me once, roots are not something you're necessarily born with. You can also grow those roots. And that's what I'm trying to do through my work. For myself and for the children in both Hyderabad and Sambhajinagar and beyond. Yes, thank you, Nivedita ji. And it feels very personal, and I hear you also. And I mean, same like you said, the stone was always there, and I think this happens to me also, and most of the people sitting here also, and all of us who are watching this. And like you have also started with the idea of place making, we all know that object like stone are always there, and but how we imagine, those objects, those places, even those benches who are quiet, cities, anything. I have also been born and brought up in a village, but I can totally resonate, because I have also such quiet stones which is always there, my interaction with them, and how I imagine those spaces. And this presentation feel very personal, and your dedication also, the way you have been working to, like you also said कि space को space बनाना है, and it's a very important, uh, not just an intervention, but idea to see our spaces, and urban ecology in a time when it's degrading and everything after that. Thank you once again, for sharing your experiences. I would just like to brief to the participants that yeah, this was Project Kritrabad. Nivedita ji was presenting their experiences of how they have uh, been working with children's. They have worked in children's of Hyderabad, and in a place called Prem Nagar Rock Garden, which was a very quiet place. Earlier, it used to be a park, but during COVID, and it was abandoned. ग्लास के टुकड़े वगैरह होते थे वहां पे. It was not accessible to the children, and how they, through this intervention, through Project Kritrabad, they have been able to, not just revive that place, but to give the meaning to that place. And now that place and all the rocks in that place have some meaning attached to it. Uh, the idea of reviving this into these spaces, they have taken us to different forms of art, and how they have been, able to engage students, especially the children, with this. Since you have already presented in English, I would like to translate in Hindi for the audience. Project Kritrabad करके निवेदिता जी ने अपने जो उनके जो वहाँ के प्रेम नगर जो है हैदराबाद में, वहाँ के बच्चों के साथ उनका जो अनुभव है वो उन्होंने अपने हमारे साथ साझा किए. उन्होंने एक प्लेस मेकिंग, जो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी जगह पे, वो तालाब वहां पे होता है, वो पेड़ वहां पे होता है, वो पत्थर वहां पे होता है, लेकिन
उस पेड़ तालाब पत्थर के साथ वो क्या मीनिंग्स है जो अटैच होते हैं, और हम उन चीजों को किस तरह से देखते हैं, इसके बारे में उन्होंने अपना पूरा अनुभव साझा किए। और उन्होंने वहाँ के जो प्रेम नगर के जो छोटे बच्चे हैं उनको अपने साथ लाया, अलग अलग आर्ट फॉर्म की वजह से, आर्ट फॉर्म की मतलब तरह से, या चाहे वो क्रिकेट की तरह से हो, वहाँ की जो डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे जो फिजिकल एक्टिविटीज उन्होंने की, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड गेम्स, उसके तहत उन्होंने कैसे वहाँ के बच्चों को उन एक्टिविटीज में शामिल किया। उन्होंने बिलोंगिंगनेस को लेके एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही है कि मतलब कैसे जो एक अर्बन नेचर जो होता है, हम जब भी हम नेचर की बात करते हैं तो हमें कोई फॉरेस्ट दिखाई देता है, कोई जंगल या कोई गांव दिखाई देता है, नदी नाले तालाब दिखाई देते हैं, लेकिन अर्बन इकोलॉजी को हम उतना इमेजिन नहीं कर पाते। उन्होंने बोला कि अर्बन नेचर कोई एक ब्लैक होल नहीं है, वहां पे बहुत सी चीजें हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं, एम्ब्रेस कर सकते हैं और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और उन्होंने यही चीजें प्रोजेक्ट क्रिएटराबाद के जरिए से और बच्चों को साथ में लेके हैदराबाद में करनी चाहिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत पसंद आया है प्रेजेंटेशन, और आई थिंक ये बाकी जगह पे भी होना चाहिए, मैं कहूँगा। Yeah, थैंक यू that's why सो I'm in मच। Sambhaji Nagar right now, यस, and people can check out like the work that is expanding in Kritrabad. I'm trying to scale it up. बहुत ज्यादा मुश्किल है, छोड़ के भाग जाने का मन करता है, पर कोशिश जारी है, क्योंकि ये काम उतना सिंपल और स्केलेबल, मतलब लोगों को मतलब थोड़ा सा कि क्या कर रहे हो टाइप्स हो जाता है, बट कोशिश जारी है, एंड इट इज वेरी मीनिंगफुल दैट यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज, एंड you know FES as a forum has recognized this work and थैंक यू acknowledged सो this. मच। वी आर ऑल्सो वेरी लाइक हैप्पी दैट यू हैव बीन पार्ट ऑफ दिस। अगर हमारे कुछ सवाल हैं तो हम वो सेशन के लास्ट में लेंगे। वी हैव स्टिल 2 more presentations to go and we are already running behind the time. So yeah, thank you once again Nivedita ji, thank you so much. इसके बाद we are joining by Satpal ji from Delhi, who will be sharing their experiences of Gram Sabha land and democratic accountability in Delhi. And welcome to the community conference, Satpal ji, and over to you. नमस्कार। कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस कॉमन के 2025 के उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि, सदस्यगण और विश्व समुदाय के सभी मेरे साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं सतपाल ठाकरान भारत देश से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाजितपुर गांव का निवासी हूं। बाजितपुर गांव बवाना विधानसभा और नॉर्थ वेस्ट पार्लियामेंट्री सीट के अंतर्गत आता है दिल्ली में। तो ये जो बड़ा ग्रीन एरिया है, ये मेरे गांव का GIS मैप है। तो जो रेड एरिया है ये लाल आबादी क्षेत्र है, ये जो लाइट ग्रीन है ये ग्राम सभा की जमीन है, और इसके चारों तरफ ये जो ग्रीन एरिया है, ये ग्रीन एरिया जो है ये एग्रीकल्चर लैंड है मेरे गांव का। तो ये गांव की जो लाल आबादी, लाल डोरा क्षेत्र है, केवल पॉपुलेशन को वहीं तक रहने का अधिकार है। ये जो कॉमन्स लैंड है जिसको ग्रेजिंग लैंड बोला गया है, यही ग्राम सभा लैंड है। तो ये गांव के लोगों की अपनी लैंड है, इसके मालिक गांव के अपने ही लोग रहे हैं। तो ये तकरीबन 700 बीघा 140 एकड़ के करीब थी। तो बचपन से हमने इसको खाली देखा है, लोगों के उत्सव के त्योहारों के इस पे हम आराम से खेलते कूदते आए हैं। इस पे क्रिकेट, फुटबॉल, हमने सारी जिंदगी जो है इस पर क्रिकेट खेला है। अब ये कहानी स्टार्ट होती है 1990 में, जब एक इसी 140 एकड़ में 9 एकड़ के लैंड पर तब के मंत्री और मुख्यमंत्री ने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अनौपचारिक उद्घाटन किया। उसकी 4 दीवारी की गई। अनौपचारिक उद्घाटन के बाद 4 दीवारी के बाद गांव वो कभी बन नहीं पाया। उसके बाद गांव वालों ने उसको लेकर लगातार समय समय पर सरकार और प्रशासन से उससे कोरेस्पोंडेंस करते रहे, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोरेस्पोंडेंस में
कोई ना कोई कमी निकाल के कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लिखे जो पत्राचार में सभी तक मौजूद है, सरकार ने कभी उसको क्रियान्वयन नहीं किया। फिर उसके बाद ये जो ग्राम सभा की भूमि है, इसको दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकार की सरकारों ने दिल्ली के सभी 360 गांवों को एक तरह से हड़प लिया है। उनकी आपस की जो है लड़ाई में इन्होंने इस पे गैर कानूनी कब्जा कर लिया है। ये जो एग्रीकल्चर लैंड है इसको एक्वायर किया जा रहा है। इस एग्रीकल्चर लैंड पे अच्छी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और ये जो लाल डोरा दिल्ली के आबादी के गांव है, ये बिल्कुल स्लम में चेंज होते जा रहे हैं। एक जीते जागते स्लम, ना आने जाने का कोई रास्ता, ना बेसिक एम्यूनिटीज, कुछ भी नहीं। पहले मेरे गांव की आबादी 800 थी, आज मेरे गांव की आबादी 8000 से ऊपर है। और इस बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण में ये आने वाले 10 साल में 80,000 से भी ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी पृष्ठभूमि में इसी 1990 का ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, गांव वालों को 2011 में इस पे स्टार्ट हुई। गवर्नमेंट ने ये विभिन्न एजेंसियों को अलॉट करना स्टार्ट किया। एक सिविल डिफेंस की एजेंसी है, उसको ये जमीन अलॉट कर दी गई। गांव वालों को इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। 2014 में गवर्नमेंट की एजेंसी, इसका स्वामित्व एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी के पास जाता रहा। अब घटना स्टार्ट होती है 22 जून 2023 को। एसडीएम, डीएम, एसीपी, डीसीपी, पुलिस की 1000 से ज्यादा फोर्स के साथ गांव में इसको डेमोलेशन के लिए, ये देखिए, ये स्टार्ट से फर्स्ट स्लाइड। ओके, हाँ जी, यही है फर्स्ट स्लाइड। आप बताइए first- सतपाल जी, कब चेंज करना है स्लाइड? हाँ जी, ये फर्स्ट स्लाइड है। तो इसका लोकेशन है जो अब हमने गांव पे एक मैप दिया था कि हम इस पे बेसिक एम्यूनिटीज के साथ इस पे एक अच्छा पार्क डेवलप किया जाए। तो ये फर्स्ट स्लाइड में इसका जीआईएस मैप है। ये 9 एकड़ का ये हमारा तालाब है। तो इस जीआईएस मैप में केवल इस 9 एकड़ भूमि पर जो है ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, अब ये डिस्प्यूटेड लैंड 1993-4 में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहिब सिंह वर्मा ने इसका एज ए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस पे जो है इनॉग्रेशन किया था। तो 2011-14 में गांव वाले इस पे कोरेस्पोंडेंस करते रहे। 2011-14 में ये सिविल डिफेंस को जमीन अलॉट की गई। तो अभी जैसा मैंने किया, 22 जून को एसडीएम, डीएम, इस पर कुछ हमारी आस्था के प्रतीक भी है, तो इसका डेमोलेशन करने और वहां पर जो बड़ी संख्या में रात को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करते हुए वहां पर डेमोलेशन करने आए। तो वहां पर सभी ग्रामवासी इकट्ठे हुए, भारी संख्या में यूथ, जो महिलाएं और मातृशक्ति, सभी ने इसका विरोध किया। हमने एसडीएम से, उन्होंने किस कानून के तहत ये एक्शन लिया, क्यों फोर्स बुलाई, हमने आरटीआई से जवाब लेना चाहा। एसडीएम साहब से उसका कोई भी जवाब नहीं दिया गया। वो हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का एक उल्लंघन था। फिर उसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई, तो गांव वालों ने कोरेस्पोंडेंस किया कि इसका जमीन का एक्चुअल स्टेटस क्या है। ये अब क्योंकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ था, तो स्टेटस में आरटीआई, उसका जवाब सब हासिल किए गए। तो सबसे पहले एक जो है 360 गांव की एक दिल्ली के पंचायत की गई, जिसमें सभी ग्रामवासियों को हजारों की संख्या में बुलाया गया, जिसमें पक्ष विपक्ष से सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया। क्योंकि सबसे गांव वालों का जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, उनका मानना कि सबसे पहले जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उनसे बातचीत की जाए। तो सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने वहां पर बड़े बड़े आश्वासन दिए। ये बोला कि हमें कोई मंत्री पद, कोई पार्टी पद नहीं चाहिए, हम गांव के विकास के लिए काम करेंगे, हमारे बच्चों के लिए जो खेल का एक ये छोटा टुकड़ा हम जरूर विकसित कराएंगे। तो ये एक राजनीतिक चीज थी जो हमें बाद में रियलाइज हुआ, ये केवल राजनीतिक जो थे आश्वासन थे। ये सब जो है एक ज्ञापन तक जो है ये सारी कहानी खत्म हो जाती थी। फिर उसके बाद हमने दिल्ली विधानसभा पर सभी गांव वालों ने मिलकर प्रदर्शन किया। तो दिल्ली विधानसभा पर जब प्रदर्शन किया गया, तो उस पर भी बड़ी बड़ी संख्या में जो हमें पुलिस फोर्स ने रोका गया। वहां पे मुख्यमंत्री के ऑफिस की तरफ से रिटर्न एश्योरेंस दिया गया कि मुख्यमंत्री जी आपसे मुलाकात करेंगे और इसका जो है आपका सॉल्यूशन देंगे। उसके बाद रिपीटेड रिमाइंडर, हमने सिग्नेचर अभियान चलाया, सभी गांव वालों ने सिग्नेचर किए, मुख्यमंत्री के पास भेजा कि आपने एश्योरेंस दिया था। तो वहां से कभी भी कोई रिप्लाई नहीं आया, कभी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर
एक दो बार गांव विजिट करके चले जाते थे। फिर उसके बाद हमने जो है माननीय 2011 में एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी जगपाल सिंह वर्सेस पंजाब केस में, जिसमें जो है मार्कंडे काटजू की बेंच ने ये स्पेसिफाई किया था कि गांव ग्राम सभा की भूमि से केवल गांव का विकास पहले होगा। तो हमने सभी गांव वालों ने हर घर से एक पोस्ट कार्ड जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी लिखा गया। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये कुछ जो अब इसमें कुछ मेंशन किए गए हैं, डेमोलेशन की रात सारा गांव किस तरह इकट्ठा था। अब जो महापंचायत को लेकर भी इसमें मेंशन किया गया है कि ग्रामीण महापंचायत हुई, जो गांव वालों ने विधानसभा पर प्रदर्शन किया, उन सब के बारे में इस पे सोशल मीडिया में ये सारा मेंशन किया गया। लगातार हमने सभी जितनी भी हमें आश्वासन मिला, हमने सभी एलजी महोदय से, हमने चीफ मिनिस्टर साहब से, हमने जो प्रशासनिक अधिकारी थे डीएम एसडीएम सबसे अनेकों बार मुलाकात की और उनसे पूछा गया। तो जो हमारे डीएम एसडीएम थे उन्होंने कहा कि ये प्रशासनिक ऑर्डर है, अगर हमें कुछ भी ऊपर से ऑर्डर आएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। जनप्रतिनिधि इसको जो है डीएम एसडीएम के पक्ष में डीएम एसडीएम के पक्ष में उसको करते रहे। हमारे कहीं पर भी जो है हमारा जो है ऑनलाइन एक मूवमेंट भी जो है इस काम पर कहीं पर भी एक फाइल भी जो है इस पे स्टार्ट नहीं हुई। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। हाँ, ये जो मैप थे डिफरेंट मैप्स थे, ये नेक्स्ट स्लाइड। तो इस डिफरेंट मैप में यहाँ पर कितने हमारे अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, प्रीवियस स्लाइड। इसमें जो है अब जो हमारे यहाँ केंद्र सरकार की एजेंसी है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके क्या प्लान है आने वाले, उसके गांव की भूमि में कहां पर किस तरह, तो ये सारा इस स्लाइड में मेंशन किया गया है। अब ये लास्ट में एक स्लाइड है, ये हमारे माननीय जो है एमएलए और अभी दिल्ली सरकार में जो है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है। तो आंदोलन के दौरान पक्ष विपक्ष इन सब का जो हमें बड़ा समर्थन मिलता था कि हम पावर में आएंगे तो हम आपके लिए जो जरूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, अपने बच्चों का भविष्य हम जरूर संवारेंगे। आप जो है ना तो माननीय मुख्यमंत्री ना माननीय सरकार सब ऐसे हो रखे हैं कि कोई सुनने को राजी ही नहीं है। कहने को तो हम जो है आधुनिक इस 5G के युग में रह रहे हैं, और ये तो भारत की राजधानी दिल्ली के जो है संसद और विधानसभा से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर ये हाल है, जहां पर कोई भी सुनने वाला नहीं है। क्या हर छोटी छोटी बात के लिए, लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, क्या अब न्यायालय का ही दरवाजा हमारे लिए एकमात्र विकल्प रह गया है। अब अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली में जहां संसद और विधानसभा से 25 किलोमीटर की दूरी पर लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन किया जा रहा है, और वहां पर जो पूरे देश में क्या हालात होंगे, वहां तो बिल्कुल तानाशाही राजाशाही चलती होगी। तो ये चीजें मैं कॉमन्स के माध्यम से, एक मेरा लास्ट स्लाइड में एक वीडियो भी था, अगर वो प्ले हो जाए तो, एक इस लास्ट स्लाइड का वीडियो, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, प्ले कर रहे हैं सर। हाँ जी। ये देखिए डेमोलेशन की रात, महिलाएं और मातृशक्ति पुलिस के सामने, ये पुलिस फोर्स जेसीबी सबके साथ हुए रात के 12 बजे गांव में सब युवा और सब इकट्ठे हुए, सारे गांव ने बड़ी महिलाओं ने मातृशक्ति ने। ये देखिए जी महापंचायत आयोजित कई सभी आदमियों ने कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक सरकारें कुछ हल दे। इसमें सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था, उनसे आश्वासन लिए गए और उन्होंने भी जो है कोरे आश्वासन ही दिए। अब देखो ये महिलाओं के बीच जागरूकता अभियान जो गांव में चलाया गया था, पोस्ट कार्ड अभियान को लेके, ये सब ग्रामवासियों के जितने भी हमारे बुजुर्ग है, युवा साथी है, महिलाएं, सबका जो है ये सामूहिक प्रदर्शन था। सब एकता के साथ यही चाहते हैं, पर लोकतांत्रिक सरकारें जो है इस पर कुछ भी नहीं करना चाहती।
हमने बचपन में जिस जमीन पर क्रिकेट खेला, हम बड़े हुए, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए कोई जमीन अवेलेबल हो। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। ये विधानसभा पर प्रदर्शन के लिए हमारी अनेक टीमों को जगह जगह पुलिस ने रोक दिया गया था विधानसभा परिसर से पहले। तो, तो जिस भी टुकड़ी को जैसे भी आगे बढ़ने का प्रोसेस मिला, हमने विधानसभा पर प्रदर्शन के लिए बाकायदा इंटीमेशन के साथ प्रदर्शन किया था। 17 अगस्त को ये प्रदर्शन किया गया, 17 अगस्त 2023 को। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करो। सिविल डिफेंस अलॉटमेंट। स्पोर्ट्स का जय दादा मालदेव। जय हिंद। जय भारत। धन्यवाद। ये विधानसभा परिसर से कुछ दूरी पर महिलाओं मातृ शक्ति की एक टीम को रोक दिया गया। तो अलग अलग तरीके से अब इसमें से एक टीम को मुख्यमंत्री आवास पर ले जाया गया, मुख्यमंत्री से मुलाकात के नाम पर। वहां पर उनके चीफ सेक्रेटरी ने ज्ञापन लिया और बहुत सारे एश्योरेंस दिए, जो रिटर्न में एश्योरेंस थे किसी को भी कंप्लीट नहीं किया गया। हमारी ये 2 गांव की जमीन गांव का है, वो भी ग्राम सभा की जमीन हो गांव की, इसके लिए प्रयोग करने के लिए, ताकि हमें अपने गांव में दूसरे डिपार्टमेंट को भी जाने के लिए ऐसा ही केजरीवाल जी के हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो बातें हैं वो सरकार बताएं। ऐसे ये जो योजना है ये बड़े आज का दौरा बन रहा है और आने वाले समय में आपको यानी कि काफी परेशानी पड़ सकती है। ये आज के समय में जो सरकारें खेलों को बढ़ावा दे रही है, खेलो भारत अभियान चल रहा है और देश की राजधानी से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर जो हमारे गांव हैं उनको स्लम बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो है अब हमारे पास रोहिणी है, द्वारका है, जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी हमारे से मात्र 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। वो हमारे बच्चों के लिए खेलने का स्थान वही अवेलेबल है और वहां पर जो है सारी चीजें पैसों से जो है वो चार्जेबल है। सारी सारी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है सब चार्जेबल है। ये गांव की जमीन गांव से ही छीनी जा रही है। जो केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसी है इसको दूसरे बिल्डर्स को भी जो है बड़े भाव में बेच रही है। तो मैं कॉमन्स के माध्यम से इस समस्या को उठा रहे हैं और हम इसको न्यायालय तक भी ले जाएंगे अगर हमें कोई हल नहीं दिया गया। तो इस प्लेटफॉर्म से मेरी एक बार फिर गुजारिश है, इस कॉमन्स के प्लेटफॉर्म पे, कि देश की राजधानी का ये मुद्दा हल होगा तो देश के दूसरे हिस्सों के भी उसके लिए भी एक ज्वलंत उदाहरण मिलेगा। लोकतंत्र में सरकारें जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए है, ना कि उनका खून पीने के लिए, उनका निचोड़ करने के लिए। ये इसी सब के साथ जो है मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि यही मेरी एक प्रेजेंटेशन थी कॉमन्स के प्लेटफॉर्म पे और इस लड़ाई को मैं पूरे गांव के साथ मजबूती के साथ आगे भी जितना पॉसिबल हो सकेगा हम जारी रखेंगे और अंत तक लड़ेंगे। और ये जो है एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो और हमारे बच्चों का जो है एक बेहतर भविष्य मिले, आने वाली पीढ़ियों को कुछ सांस लेने की, इस दिल्ली के प्रदूषित माहौल में जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, तो ये ऑक्सीजन की कमी जो प्रदूषण का एक मेन कारण है एक पॉपुलेशन डेंसिटी। और हमारे यहाँ पर जो ये जो अनऑथराइज्ड इंडस्ट्रियल एरिया बनाए गए हैं, अनऑथराइज्ड लॉजिस्टिक चीजें बनाई गई है, तो ये एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर हो रहा है और ये ग्राम सभा में भी जो है ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल की और ये जो है जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज है उन पे फोकस किया जा रहा है। तो गांव जो है ये जीते जागते एक स्लम बनते जा रहे हैं और हमारा जो है यही गुजारिश है कि स्लम बनने से बचे, बेसिक एम्यूनिटीज मिले, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिले। और चीफ मिनिस्टर द्वारा 1990 में एक उद्घाटन किया गया 9 एकड़ का एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो मिले। गांव की 140 एकड़ जमीन सरकार कब्जा कर चुकी है जिसपे हम कभी बचपन में खेलते थे। तो धन्यवाद। धन्यवाद सतपाल जी. Thank you so much for sharing your experiences and highlighting your struggle. And we also hope that you will get success in this. And it's really, inspiring to see
people are fighting for places like this. In the starting of the session only, we have discussed about how we imagine city through different public spaces, and when we talk about urban commons, what are those urban commons? And we often forget to mention about sports complex or a playground, and how it is very important part of the city, and how it's very important part of the cultural space of that city. And in the previous presentations also, we have spoke about how physical spaces, how ecological and social and cultural spaces are also important part of city. And we can also see this through this presentation, that how this your struggle for Dada Maldev Sports Complex is very important part of this, you know keeping the spirit of the commons alive. Their struggle was about to up their struggle was about uphold the principles of commons, and how the efforts of securing land rights, and strengthening the local governance of that particular place in their village, which is in the outskirt of the Delhi, in Bazitpur, Thakran. हाँ सतपाल जी. अंकुश जी, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा. हाँ. जो दिल्ली में ग्राम पंचायतें होती थी, तो ग्राम पंचायतें 1990 में वो भंग कर दी गई, और वो माननीय उपराज्यपाल साहब के ऑर्डर से भंग कर दी गई. माननीय उपराज्य साहब के पास ऐसी कोई भी शक्तियां नहीं है, वो केवल राष्ट्रपति के ऑर्डर पर. तो जब से ये 1990 में ग्राम सभा जो है भंग की गई, तो ग्राम पंचायत का इस जमीन से जो है इससे कंट्रोल खत्म हो गया. और इस 140 एकड़ की 700 बीघा जमीन के लिए केंद्र और राज्य सरकार की जो एजेंसियां है, वो कोर्ट में भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रहती है. और जो लोकतांत्रिक अधिकारों में जो गांव वालों के लिए इस्तेमाल होने के लिए चीजें हैं, तो वापरी इसका कुछ नहीं. तो 1990 से जो पतन की शुरुआत की थी, उपराज्यपाल ने किस ऑर्डर से वो निकाला था, हमने उसके लिए भी आरटीआई लगाई. वहां से उसका भी कोई जवाब नहीं आया कि किन शक्तियों के तहत उपराज्यपाल ने किया, क्या उनके पास ये सब पावर थी. तो उस आरटीआई का फर्स्ट अपील का कहीं ना कहीं हम सीआईसी के पास जा रहे हैं, कहीं से कोई जवाब नहीं. जैसे आरटीआई एक्ट को भी जो है ना बिना दांतों का बना दिया गया है. घूमते रहो जी 2-2 4-4 साल न्यायिक प्रक्रिया में. एंड दिस ऑल इज हैपनिंग इन द राइट दिस दिल्ली एनसीआर, जस्ट 20-25 किलोमीटर फ्रॉम दिस पार्लियामेंट एंड विधानसभा. एंड व्हाट दीज डोंगीज आर डूइंग देयर, एंड व्हाट देयर यू सी द डेमोक्रेटिक राइट्स, right? The things are happening like this way. That scoundrel in that last slide, he was the MLA. He was present here each every single day. Give me the power, I will do this much, I will do this much. And this is a system. I'm fed up with this system. Written is something else and doing something else, Ankush ji. Right? So it is a very much fight. For every single inch, every single centimeter, you have to go to court, and court 10 years, 15 years, 20 years. The matters still pending of the Gram Sabha from 1980s, they are still pending. And this is the new one, I have to go again to court, Ankush ji. So hope something better will appear. Yes, Satpal ji, and like many of us are seeing this presentation, and we are also able to resonate with you, and that's the. So I come from Nagpur, and the same kind of struggle also going in my city also, and the people who have joined us are also been able to resonate ki how we share a common issues in securing our rights to even our rights to play. Like you have mentioned ki this was a place where you have born and brought up, और आप बचपन से खेले आ रहे हो, and now that very place is turning into something else, and not have been given to the children of its place which they deserve. It's very stark reminder also that how we are losing our urban spaces day by day, and how struggles like this, struggles of commoning like this, important for us to imagine our cities and especially urban spaces. Thank you so much, Satpal ji, once again. One last personal thing. हाँ, बस आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि we are already running behind the time. अंकुश जी, मैं बचपन से मेरा क्रिकेट प्लेयर बनने का सपना था. यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी, ग्राउंड को साफ करते खेलते. पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट नहीं किया.
तो मैं ये चाहता था एक ग्राउंड बने। मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया, कोई मेरे गांव का बच्चा कोई और आगे आए, तो उस सपने को लेके मैं चाह रहा हूँ वहाँ ग्राउंड बने, क्रिकेट बने, यहाँ से भी बच्चे जो उनकी सेहत अच्छी रहे। तो इस सपने के लिए जो मैं लड़ाई जारी रखूंगा अंकुश जी। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सतपाल जी, and we also wish you a best luck and all the strength to continue this struggle, and we थैंक यू hope you. अंकुश जी। And thank you so much. Thank you once again for sharing your experience. Now we will move to the last presentation of the session, which will be from Maharashtra. Trupti Gomkale ji from Nagpur will be joining us. They will be sharing their presentation about how they have revived the Isasani pond through the collective efforts of their group. Isasani ji, sorry, uh, Trupti ji, are you there? यस यस Okay. नमस्कार. नमस्कार जी, आप शेयर कर सकते हैं. यस दिसतंय. हॅलो. हो दिसत आहे. बर. मेरे को मराठी नहीं आती है मैडम. आवाज येत आहे सर माझा? हॅलो. हो येतोय आवाज. नमस्कार. मी कम्युनिटी मधून बोलते. या आमच्या कम्युनिटी मेंबर. नमस्ते सर. नमस्ते. मैं भीम से बोल रही हूँ, हाँ. नागपुर. यस. मैं छोटा सा तालाब था हमारे बस्ती में, उसमें जैसे हम लोग कचरा काड़ी पूरे मोहल्ले के लोग सब डालते थे, उससे बहुत गंदगी होती थी. तो अभी हम सब मिल के, पूरे महिलाएं मिल के एकजुट होके हमने साफ सफाई किए और कचरा गाड़ी के लिए बोले ग्राम पंचायत में, तो अब कचरा गाड़ी आती है. कचरा गाड़ी आती है तो फिर हम लोग कचरा डालते हैं वहां. अभी स्वच्छता है यहाँ पे, साफ सफाई भी है और हम लोग सब मिल के ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे कचरा ना हो. और आगे भी हम चाहते हैं कि ऐसा उन्नति होते रहे और साफ सफाई हो, कि हमारे भी बच्चे अच्छे से पले, अच्छे से रहे. हम अलग अलग देश से आए हैं अपने कमाने खाने के लिए, रोजी रोटी के लिए. तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे और अच्छा हो, सब मिल के. थैंक यू. हॅलो. हॅलो. Yes, you are हॅलो. audible. Yes, you are audible. हा. ओके. सर इसासणी नागपूरमधनं इसासणी हा तलाव आधी आम्ही सुरुवातीला सर्वे केला. तिथे आम्हाला या तलावामध्ये समस्या दिसली की तिथे पूर्ण कचऱ्याचा ढिगारा बनलेला होता आणि त्या तलावाचं म्हणजे पाण्याचा उपयोग नव्हता. म्हणजे फक्त पूर्ण समुदायातील लोक एक धार्मिक विधी करण्यासाठी तिथे जात होते आणि घरगुती कचरा त्याच्यामध्ये तलावामध्ये टाकत होते आणि या कचऱ्यामुळे परिसरातील लोकांना आरोग्याच्या मोठ्या समस्या उद्भवत होत्या. आता आम्ही एक काम करायचं म्हणून आम्ही तिथे ग्रामपंचायतकडनं आम्ही मागणी पत्र घेतलं आणि समुदायाने मिळून तिथे काम करण्याचं ठरवलं. पुढे आम्ही परवानगी घेतल्यानंतर तलावामधील आम्ही कचरा 61 किलो कचरा इतका आम्ही त्या तलावामधून काढला आणि 22 क्युबिक मीटर इतका खोल त्याची खोदणी केली आणि त्या तलावाची 22 लाख लिटर पाण्याचा साठा आता सध्या तलावामध्ये समाविष्ट आहे. तलावामध्ये कचरा होऊ नये म्हणून आम्ही समुदायामध्ये आम्ही विलेज वॉटर सॅनिटेशन कमिटी म्हणजे पाणी समितीची स्थापना केली. ही समिती प्रामुख्याने कामामध्ये अग्रेसर असते आणि या कमिटीच्या माध्यमातून आम्ही पुढे तलावामध्ये कचरा होऊ नये म्हणून काम होत असते. कचरा प्रतिबंधात्मक याच्यासाठी आम्ही इथे 3 ते 4 ठिकाणी कचरा कुंड्या बसविल्या आणि समुदायातील सर्व लोक ते कचरा कुंड्यांचा वापर करतात. पुढे कचरा प्रयत्नांनी मीटिंग्स घेऊन गटचर्चा घेऊन इथे कचरा गाडीचे सुद्धा प्रयोजन झाले आणि आठवड्यातनं एकदा इथे कचरा गाडी येते आणि समुदायातील लोक त्याचा वापर करतात. त्यामुळे इथे परिसरामध्ये स्वच्छता दिसून येत आहे आणि आरोग्याच्या समस्या सुद्धा आता कमी दिसून येत आहे.
आम्ही सातत्याने समुदायामध्ये वेगवेगळ्या बैठकी घेत असतो. त्याच्यामध्ये आम्ही कचरा समस्या म्हणा किंवा पाण्याची समस्या म्हणा, या विविध विषयावर आमच्या चर्चा होत राहतात. आणि जी आम्ही स्थापन केलेली जी पाणी समिती आहे, ती सातत्याने समस्या सोडवण्याकरता नेहमी अग्रेसर असते. आम्ही गटचर्चा, महिन्यातनं एकदा स्वच्छता मोहीम, तलाव भ्रमंती आम्ही यासाठी घेतो की जर तुम्ही कचरा टाकला आणि धार्मिक जेव्हा विधी असतात तेव्हा नकळत काही लोक त्या तलावामध्ये कचरा टाकतात, तेव्हा आम्ही प्रामुख्याने तलाव भ्रमंती करतो आणि तुमच्या धार्मिक पूजापाठ ह्या इथे केल्याने तलावावर किती दुष्परिणाम पडतो हे प्रामुख्याने आम्ही त्या तलाव भ्रमंतीच्या याच्यामध्ये चर्चेच्या माध्यमातून आम्ही सांगत असतो. आम्ही समुदायामध्ये भिंती प्रत्येकाच्या घरावर अशा म्हणजे बॅक साईडला संदेशात्मक एक चित्र, मेसेजेस लिहित असतो. म्हणजे हे कम्युनिटीच्या माध्यमातून घेत असतो. छोट्या पोरांसाठी म्हणून आम्ही समुदायामध्ये कचरा, आम्ही लहान मुलांसाठी, लहान पोरांना कचऱ्याचा गांभीर्य समजायला पाहिजे आणि त्यांच्यामध्ये मुळातनं ह्या गोष्टी रुजायला पाहिजे की कचरा ही समस्या आणि पाणी हे किती गरजेचं आहे. त्याकरिता आम्ही वेगवेगळे उपक्रम घेत असतो. त्यामधला एक उपक्रम म्हणजे की छोट्या पोरांसाठी आम्ही स्टडी टेबलवर ठेवण्याची कचरा पेटी, म्हणजे टाकाऊपासून टिकाऊ बनवण्याचा उपक्रम आम्ही याआधी घेतलेला आहे. म्हणजे लहान पोरांनी स्वतःचा कचरा निदान त्या कचरा पेटीमध्ये टाकायला पाहिजे आणि त्यांना पुढे सवय लागायला हवी. त्यामुळे आम्ही हा उपक्रम, अशा छोट्या छोट्या उपक्रमाचा सहभाग आमच्या याच्यामध्ये असतो. तलाव स्वच्छ झाला, तलावामध्ये आता पूर्वीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात बदल झालेला आहे. तलावातील पाणी स्वच्छ झालेले आहे आणि आता बोर इथे स्थानिक बोर आणि नळांना पाण्याची पातळी वाढलेली आहे. त्यामुळे इथे पक्षी, छोटे कीटक, अशा वेगवेगळ्या पक्ष्यांचा सहवास इथे तलावाच्या भोवती दिसून येतो आहे. शाळा लेवलवर आम्ही वेगवेगळ्या उपक्रम घेत असतो. त्याच्यामध्ये आम्ही चित्रकला स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, या स्पर्धेच्या एकच हेतू की मुलांना तलावाचे गांभीर्य, पाण्याचे गांभीर्य सतत लक्षात यावे आणि पुढील जीवनामध्ये त्यांना पाण्याचे महत्त्व, तलावाचे महत्त्व हे त्यांना रुजावे. त्याकरिता आम्ही वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटींचा सहभाग म्हणजे घेत असतो. ऍक्टिव्हिटीमध्ये आमचे विषय असतात की आधीचा तलाव आणि आताचा तलाव, आणि आधीच्या तलावापासून होणाऱ्या समस्या आणि आताच्या तलावापासून होणारे फायदे, यामधील तफावत आम्ही त्या उपक्रमाच्या माध्यमातून दाखवित असतो. इथे आमची कम्युनिटी मोठ्या प्रमाणात सक्रिय आहे. कुठल्याही मुद्द्यावर काम करताना विलेज वॉटर सॅनिटेशन जे कमिटी आहे ती अग्रेसर असते आणि पुढे आमचे वेगवेगळे म्हणजे बदलाव झालेला आहे, पण तरी पण काम करणे अजून बाकी आहे. अजून मोठ्या प्रमाणात समस्या आहे की ज्या आम्हाला सोडवायच्या आहे. काही प्रमाणात समस्या थोडाफार बदलाव झालेला आहे, आणखी बदलाव बाकी आहे. आधी इथे कचऱ्याच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे सर इकडे कचरा गाडी किंवा प्रशासन इकडे दुर्लक्षित होतं, कारण की हे एक एन्क्रोचमेंट एरिया आहे. त्या कारणाने प्रशासन दुर्लक्षित करत होतं आणि आता समुदायाच्या सहभागाने आणि प्रयत्नांनी इथे प्रशासनाचे थोडे लक्ष गेलेले आहे आणि सुविधा पुरवायला सुरुवात झालेली आहे. त्यामुळे लोकांना सुविधा मिळत आहे आणि परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झालेला आहे. हॅलो हॅलो हो हो हो, हा, तो आवाज येतोय तुमचा. येतोय आवाज? ही शेवटची स्लाइड आहे का? हो. आता आमचं हे
समुदाय आणि समुदाय आणि CSR आम्हाला आर्थिक सहाय्य आणि तांत्रिक गोष्टीसाठी इथे मदत करतात आणि स्वयंसेवी संस्था सुद्धा आम्हाला याच्यामध्ये कार्य करतात आणि या सगळ्यांच्या सहकार्यामुळे इथे आम्ही काही बदलाव करू शकत आहे. ठीक आहे सर. ठीक आहे. धन्यवाद तृप्तीजी. तृप्तीजी तुमच्यासोबत कोण होतं? मागे ज्या काकू होत्या त्या? या आमच्या कम्युनिटी मेंबर्स होत्या. हे त्यांचं आम्ही नाव? सगळे आम्ही मिळून सगळे इथे काम करतो, त्यातल्याच या होत्या. एक महिला गट हाँ एक महिला गट बनते हैं जिससे हम लोग कार्य करते हैं, साफ सफाई के कार्य करते हैं, कहाँ गंदगी है क्या है ये सब हम विषय पंचायत में रखते हैं सर, कि मतलब अपने बस साफ सफाई हो यहाँ पे। जैसे ये पानी अगर जाम हो रहा है, यहाँ पे गंदगी हो रहा है, तो यही पानी फिल्टर होके जाता है कुआं में, फिर वही पियेंगे तो बीमार होंगे ना, इसलिए साफ सफाई रहेगा तो हमारे बच्चे अच्छे रहेंगे, हम अच्छे रहेंगे, इसलिए अभी बहुत साफ सफाई है यहाँ पे और होना भी चाहिए। और ये मैडम ने आई बताई हमको कि ऐसा ऐसा करना, एप्लीकेशन लिखे हमने और फिर वहां पे दिए ग्राम पंचायत में, तो ग्राम पंचायत वाले सुने और कचरा गाड़ी भेज रहे हैं और हम लोग कचरा गाड़ी में डालते हैं और यहाँ साफ सफाई का देख रहे हैं और जाके तालाब पे भी देखते हैं कि कोई कचरा तो नहीं कर रहा है, और सब मिलके कर रहे हैं, मतलब पूरा महिला संगठन मिलके साथ में कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार. धन्यवाद. नमस्ते. Thank you, Trupti ji. Thank you so much for sharing your experiences. Yes, Piyush. So, hi Ankush, and I would like to thank Trupti for presenting all this thing. Trupti is my teammate, and I will just like to brief what she has explained throughout the presentation. So, Isasani being a complete encroached area out in the outskirts of Nagpur, is facing severe ecological challenges in terms of pollution, water pollution, air pollution. And while a survey, we identified that this lake was completely degraded and full of water hyacinth and solid waste dumped inside the lake. And from that day onwards, with the help of community, with the help of local PRI members and administration, we started to revive this lake. And we are continuing to do the efforts for the lake. And let's hope that few things turn out in our side, and we will get to see a good picture of that particular area. That's all. Yes, thanks, Piyush, for translating that with us. तृप्ती जी, तुमच्या सोबतच्या काकू आहेत त्यांचं नाव सांगू शकता का एकदा? आरती सिंह. एक मिनिट होल्ड. हाँ. ठीक है. ठीक. Thank you. So Piyush has already translated this for us, the presentation which we have shared Trupti ji in Marathi. I just would like to like talk a couple of sentences about this in Hindi, and then we will close the presentation. तो ये प्रेजेंटेशन महाराष्ट्र के नागपुर शहर के इसासनी से था, जो इसासनी में एक पॉन्ड है, जो वहाँ के समुदाय के लोगों ने कैसे कलेक्टिव एक्शन के माध्यम से उस पॉन्ड को रिवाइव किया, उस पॉन्ड का कैसे संरक्षण उन्होंने किया, जो वाटर हाइसिंथ उसमें बढ़ रहा था, जो पिछले कुछ सालों में उस पॉन्ड को एक डंपिंग के तरह यूज किया गया था, लोग उसमें कचरा डालते थे, और कैसे उस पॉन्ड का पूरा जो स्वास्थ्य है वो खराब हो रहा था और उस पे कैसे लोगों ने वहाँ की पंचायत की मदद से काम किया, वो अनुभव तृप्ति जी ने और आरती जी ने हमारे साथ साझा किए। उन्होंने ये काम करने के लिए गांव के लोगों ने एक अपना लोकल कमेटी बनाया, और उस लोकल कमेटी के जरिए वो लोग आसपास के लोगों के साथ डिस्कशंस करते थे, अलग अलग कम्युनिकेशंस ड्राइव करते थे, मैसेजिंग, अलग अलग तरह के मैसेजिंग के हिसाब से वो लोगों को इसमें शामिल करते थे, और कैसे उन्होंने समुदाय के लोगों को एंगेज करके इसासनी का जो तालाब है उस पे काम किया।
वो अनुभव उन्होंने साझा किए। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन भी वहाँ हमें बताई कि कितनी भी छोटी सी एक्शन क्यों ना हो, लेकिन अगर वो हम साथ मिलके अगर करेंगे तो उसको जो पूरा पर्यावरण है उसमें बदलाव लाने की उसमें काबिलियत होती है। और वो हम सिर्फ यही प्रेजेंटेशन नहीं, आज दिन भर में हमने जो प्रेजेंटेशन देखी और हम कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस में जो भी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं उनके माध्यम से हमें यही सीख मिल रही है। और कैसे कम्युनिटी अगर साथ में मिलके अगर प्रयास करें तो हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, ये सब हमने पिछले इन सभी प्रेजेंटेशन से सीखा है। वो और जिस तरह से हमने एक बात बोली कि कैसे बच्चों को भी इन सब चीजों में शामिल किया जाता है। जैसे इसके पहले जो निवेदिता जी का जो प्रेजेंटेशन था और बाकी जो भी प्रेजेंटेशंस थे उनमें भी हमने देखा है कि कैसे जो स्कूल चिल्ड्रन से, कैसे छोटे बच्चे और युवाओं को हम इन सब जो चाहे वो कंजर्वेशन एक्टिविटीज हो, रिस्टोरेशन एक्टिविटीज हो और सिटीजन साइंस इनिशिएटिव्स हो, इनमें कैसे उन छोटे बच्चों को भी स्कूल में जाने वाले स्टूडेंट्स को भी हम शामिल करते हैं। और इसमें भी उन्होंने जैसे इलोक्यूशन कंपटीशन हो गया, ऐसे राइटिंग कंपटीशन और अलग अलग तरह के क्विजेस और स्कूल में जो इनिशिएटिव्स हैं उनके माध्यम से उन्होंने बच्चों को भी इसमें शामिल किया, क्योंकि ये आने वाली ही पीढ़ी है, आने वाली ही जनरेशन है जो इन चीज़ों का, सब चीज़ों का ख्याल रखेगी। मैं तृप्ति जी का और आरती जी का और साथ साथ पीयूष जी का, सभी का धन्यवाद करता हूँ हमसे जुड़ने के लिए। Thank you once again, and I think with this we have completed all the presentation. We had 6 presentations today. It was a long session. Thank you so much for being with us till the end. We will now have a question and Q&A session. हमारे पास चैट बॉक्स में ऑलरेडी 3 सवाल है, वो हम सवाल लेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी के और भी कुछ सवाल या कुछ सुझाव है, कुछ डाउट्स हैं, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप सब लोगों से एक गुजारिश है कि हमने चैट बॉक्स में लोकल स्क्रीनिंग का फीडबैक फॉर्म की लिंक डाली है। कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस को हम लोग एज अ इन प्रेजेंटेशंस में तो जुड़े ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग लोकल स्क्रीनिंग के भी माध्यम से बहुत से लोग जुड़े हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो लोग लोकल स्क्रीनिंग के माध्यम से जुड़े हैं, वो लोग अपने अगर आप अपना कोई सवाल है वो अगर पूछना चाहते हैं तो आप वो भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन Q&A सेशन के पहले मैं सभी प्रेजेंटर्स और जो फैसिलिटेटर्स हैं और जो हमारे जो लोग हमसे जुड़े हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना कैमरा थोड़ा 1 मिनट के लिए शुरू करें, हम सबका एक ग्रुप फोटो लेंगे। थैंक यू एवरीवन। Aura, we request you if you are able to please turn on the screen. Will it be possible for you? Yeah, thanks. All right. Gallery mode. Unpin us and then gallery mode. Thank you everyone. Ankush, you are on mute. Okay, thank you everyone. Now we will move to Q&A session. Just a small request, we are already running behind of time, so we have to wrap this up quickly. We'll take questions very briefly. We have one question for Suyash from Veena ma'am. Can blogging make government accountable? Yes, Ankush. Definitely blogging make a government accountable. Currently we are a volunteer group, not registered as a NGO or something, but in future we are trying to do the registration as a NGO, so we can
make more impact on the government about this initiative. Also, it's a community-based work, so government are accountable for this. We we also see that we observe the all hotspots areas in the city, and we also share the photos with the uh, particular department in municipal corporation, and they are respond that good. Yes. Thank you, Suyesh. Suyesh, we have one more question for you. People are asking, how do we make Nanded a people's city, and how you, as a collective of youth, imagine Nanded as a people's city? Uh, Nanded is a people cities already. Maybe more people have to come together and work for the city. That's make Nanded as a people city, definitely. Right. थैंक यू सुयश. हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं लोकल स्क्रीनिंग के माध्यम से, और जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़े हैं, अगर कोई सवाल है तो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं. हम अनम्यूट करेंगे और वीडियो शुरू करेंगे और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. किसी का कोई सवाल है, सुझाव है या कोई डाउट है, या फिर हमारे लिए अगर कोई सुझाव है तो आप वो भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं. हमारे जो प्रेजेंटर्स जुड़े हैं अलग अलग जगह से, अगर उन्हें एक दूसरे के साथ अगर कुछ बातचीत करनी है तो वो भी कर सकते हैं. If anyone have their questions, doubt, they can ask, they can raise their hand. If they have any feedback for us for the session. अंकुश, फीडबैक के तौर पे मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत थैंक यू फॉर द कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस टीम. लास्ट ईयर उस साइड बैठ के जो काम किया और आज इस साइड बैठ के प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छा मुझे लग रहा है. जो भी कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस टीम पिछले 2-4 महीनों से इस पे मेहनत ले रही है, उनके लिए थैंक यू सो मच. स्पेशली थैंक्स टू अंकुश, ट्रीजा आर देयर. थैंक यू ट्रीजा ऑल्सो, एंड ऑल द कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस टीम. जितने भी प्रेजेंटेशन अर्बन कॉमन्स थीम पे हुए, उन सारे प्रेजेंटर्स को भी मैं थैंक यू करना चाहूँगा. और बहुत सारा चीज़ें मैं देख पाया हूँ, सीख पाया हूँ. तो मे बी आई विल अप्लाई ऑन all these things in Nanded also. Definitely, Suresh. Thank you so much. And we really, we really enjoyed your presentation, and it's really inspiring to see us. A group of youth is, taking the onus and joining hands together to, for the conservation of their urban spaces. And thank you so much. Aura, if you have any question or if you want to share anything with us, you can share. Thank you again for the opportunity. English is not even my original language, but it was wonderful to share these stories with you and hear about you too. Thank you so much. We also thank you from our community conference team, behalf of our team, for joining us and sharing your experiences. And we all also wish you all the best in the work you're doing, and all the success in all the efforts, people and the presenters who shared their stories today, the initiatives they are undertaking. Thank you so much. If anyone has any question, they can ask. Just one more announcement, that in the chat box we have shared a link for the local screening feedback form. So this is a local screening feedback form. If you have joined us via local screening, please fill that form. This will help us to understand that how many people participated through the local screening, how many young people, women leaders also participated, what was their feedback, how did they find it, and this will also help us to get the updates from the ground and to become the part of the discussions. हाँ, हमने लोकल स्क्रीनिंग फीडबैक फॉर्म का लिंक डाला है चैट बॉक्स में. अगर आप लोकल स्क्रीनिंग के माध्यम से हमसे जुड़े हैं तो प्लीज आप लोकल स्क्रीनिंग का फॉर्म भरिए, और
इसमें हमें आपसे सुझाव मिलेंगे, बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, कितने लोगों ने अटेंड किया था सेशन, कितनी महिलाएं थी, कितने यूथ थे इसमें, युवा लोग कितने थे, और आपके क्या क्या सुझाव है, किन किन बातों पर चर्चा हुई, इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी इस फीडबैक फॉर्म से, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले संस्करण को मतलब बेहतर बनाने के लिए। और हमें भी इससे बहुत सारी सीख मिलेगी कि हम इसे कैसे और अच्छा बेहतर बना सकते हैं, और कैसे और अच्छा इंटरैक्टिव बना सकते हैं। या फिर अगर आप लोकल स्क्रीनिंग के माध्यम से जुड़े हैं और अगर आप चाहते हैं कोई सवाल पूछे, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। Okay, then if there's no there are no more questions, then I think we can close. Okay, then we will close the session. This was a session dedicated for the urban commons with the theme governing green spaces in an urban environment. We have been joined by 6 presenters from different part of the country as well as from Peru, and we are so delighted to see all the presentations, your dedication and your efforts to secure the urban spaces and to share the spirit of the commons, urban commons, and how these all efforts are being undertaken for the conservation of the places which we all belongs to. Thank you so much. Thank you so much for joining us. And we will close this session. But before that, I would also request to all the participants to join us after the lunch break. We will be resume at 2 p.m. and we have other sessions on food security, subsistence and well-being, water governance, and pastoral system. As you all know, that this is also a year of International Year of Rangeland and pastoralism, so dedicated this year. So we have also dedicated presentations for that. We have also presentations on forest governance and land commons. And please join the session of your interest, join the stories of your interest, and be a part of this conference for the next 2 days. We will be joining again at 2 p.m. And hope to see you all there. थैंक यू सो मच। 2 बजे हम फिर से जुड़ेंगे, अलग अलग थीम्स पे, उस पे भी चर्चा होगी, वाटर गवर्नेंस को लेके, फूड सिक्योरिटी को लेके अलग अलग थीम्स है, उस पे हमारे साथ देश और बाकी जगहों से प्रेजेंटर्स जुड़ रहे हैं। मैं आप आशा करता हूँ कि आप सब लोग 2 बजे हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच, और इसी के साथ हम ये सेशन क्लोज करते हैं। On behalf of my team, Devangana, Triza, and Adinath, I thank you all, and I also thank them for being a huge support in technical support. Adinath was handling Zoom meeting for us. Triza was rapporteuring the session for us, and whole sessions coordinator was done by Devangana, who made sure that all the presentations are in its place, and presenters, and she was the in charge of like making all those arrangements. So I thank my team, and thank you everyone once again for joining us, and we will close the session. Thank you. Thank you, Ankush. Thank you. Thank you. Thank you so much.